Hello friends, welcome back. So this is the second part we are continuing of the chapter 1. Uh, so so last time we have discussed about the what is the meaning of the financial instrument, then financial asset, and now we are discussing about the financial liability. Correct? So okay, so one point just I want to emphasize this one relating to the this one to exchange to deliver the cash and the other financial assets. So what I've told you, so normally, so just little bit means I'm just giving one example in this one also. So like as per my explanation, so I am saying that other financial asset here it means the equity shares. Okay, so the equity shares you need to think equity shares. And to deliver the cash, so deliver the cash, so this is like so contractual obligations, so this is the future transaction which I explained you. So future, in the future you are delivering the cash, or you are uh, you are paying the cash in the future, or you are delivering the equity share in the future. Correct. So like suppose if I am taking one example, like A limited is having a debtor from the B limited. Okay. So like A Limited has provided the services, goods or services. Okay, so this leg is completed, and this after the 2 months, so B Limited after using these goods or services, it will pay the amount in cash. So this is completed and this is pending. So for A, it will be the financial asset, and in the financial asset also it will be the debtors, and for B, it will be the financial liability. So So like suppose if the B limited instead of the cash, if it is paying the bills receivable, means whatever the bills receivable B is having, so it can pay to the it can pay to the asset, and it can pay to the A limited, and the A limited will then honor this bills receivable. So so like for the A limited, so this debtors it gets converted into the bills receivable, and then later on it will get converted into the cash. So normally in the classes they say like whatever you are receiving the other financial assets. So that means the bills receivable. So it will come under this one. But I am in my as per my understanding what I've explained you, ultimately you are getting the cash, correct? So I will be classifying it under the to deliver the cash. So that's why under the other financial asset, I am just taking the equity shares. So what equity shares I will means the A limited will be delivering. So that will be coming uh, under this category because here is a contractual obligation. So contractual obligation to deliver the equity shares. Correct. So I hope this point is clear now. So now starting this thing. Okay. So the definition of the financial liability includes a carve out from the IS 32. So IS 32 is the accounting standard under the IFRS world. So there is a carve out. Carve out means uh, uh, that the Ind AS 32 is having a different rule here as compared to the IS 32. So here it is saying the variability due to the foreign currency shall be ignored while classifying a foreign currency convertibility bond as equity, liability of the compounded financial instrument. So this you will be reading in, we will be covering in the unit 3. So there they have given the complete detail example about it. So I don't want to divert here. So we will discuss all these things in the unit 3, just means in the chapter 3. So just for the time being, just park it, uh, and we will cover this thing in detail when we'll be covering the unit 3 or the chapter 3. Okay. Okay.
So here the financial liability. So the loans and the borrowings. So loans and the borrowings. So here means you need to. So here the contract is there. So in the contract you need to pay the cash in the future. So in future you will be paying the cash. Okay. And the payment payable for the purchase and the goods and the services. So here the goods and service leg is completed. So now uh, only the second leg is pending, that is a payable. So and that is also in the future. So that's why this is a financial liability. So correct. The financial lease liability. So in the financial lease liability also, uh, uh, that you will be paying means you will be paying the cash for using the asset. Correct. So it's the financial lease liability. But yeah, but this also in detail we will be covering in the lease accounting standard. Okay, so here also only the one leg is there, so that is of the cash payment, and that is also in the future. So that's why it is coming under the financial liability. Redeemable instrument like the preference shares or the debentures. So redeemable means it is talking about the principal amount. So you will be paying the principal in the future. Okay, so principal in the cash in the future. So that's why it's a financial liability. Guarantee given for the guarantee given for the repayment of the debt upon the borrower's default. So this also we have covered. So here the guarantee is given. So in the guarantee given, you are receiving the fees. Maybe you are receiving the fees now, and then in the future you will be paying the amount what the borrower has defaulted. So now, so here also the only the one leg is there. So that is the payment in the future of the cash. So that's why it's a financial liability here. Okay, so they have explained it like means the loans payable of the bank loan, financial liability, the contractual obligation to pay the cash. So that is in the future. Trade and the other payables, financial liability contracts. So it is also the in future you will be paying the cash. So bill payable and the acceptance. Here also in future you will be paying the cash. So that's why it's a financial liability. Deposit received. You have received the deposit, but contractual means you will be reimbursing that money in the future. So that's why uh, it's a financial liability. Mandatory redeemable preference shares. So this is the same thing that here also you need to pay the cash in the future. So in all these things, one leg is completed, the another leg is pending. Where in the another leg you need to pay the cash in the future. So that's why it is coming under the contractual obligation. So that's why it's a financial liability. Yep. Okay. So then this one the financial guarantee given. Also see the scope section of the to understand when the financial guarantee contract can be regarded as an insurance contract. So this we will be discussing later. So here the scoping, what I've explained you in the beginning, that the scoping is also there, the scoping out. So there we will be discussing about it. Yeah, the financial guarantee contract. But the logic is the same, that you are receiving the fee. So that means only the one leg is pending, the another leg. So first leg is completed, the second leg is pending, that to pay the amount in case of the borrower's default by the guarantor. So that's why it is also a financial liability. Okay. Um, Now quickly just going through this example. Okay. Yep. So A Limited issues a bond. A Limited issues a bond at a principal amount of 1,000 per bond. Okay. The term of the bond requires the annual payment in the perpetuity. In perpetuity means you are not having any maturity at a stated interest rate of 8%. Applied to the principal of the amount CU 1,000. So that means the interest amount is equal to 1,000 into 8%, which is coming your 80 rupees. Okay, 80 CU. CU is a currency. Um, and this is also per annum, it is mentioned in perpetuity, applied to the principal amount of the CU 1,000. Assuming just a minute, what it is written. Yeah. Okay, so assuming the 8% to be the market rate. So that means
it is issued at par. So like your uh, the effective interest rate means the discount rate and your the coupon rate are same. Okay, this I will explain you now. So assuming the 8% to be the market interest rate for the instrument when it was issued, so issue assumes a contractual obligation to make the stream of the future interest payment having a fair value of 1000 on the initial recognition. So evaluate the financial instrument in the hands of the both the holders. Okay, so uh, okay, so just I'm giving one example here. So like plain vanilla bond, uh, plain vanilla bond of face value rupees 1 lakh is issued uh, at the coupon rate of 10% per annum. The market interest rate of similar bond is is say 12% per annum. Okay, find out the issue price. Issue price, correct. And this bond, the life of the bond is say 3 years. Okay, so just for the time being, just focus on this example because you should be having the understanding about the coupon rate, what is the coupon rate, what is the market interest rate. Okay, so just I'm preparing one equation here. So this is for the 3 years. So the coupon it is 10%. So 10% into 1 lakh. So it will be coming 10,000. Correct? 10,000. So 10,000 I will be getting for the 3 years. Means I will be paying. So means this I am talking from the issuer point of view. So the issuer will be paying 10,000 rupee each year in the form of the interest. Okay. And plus on the maturity, it will be reimbursing that principal amount also. So 1 lakh. Correct. So 1 lakh. Or maybe just I will write it here. Mm, yeah. So plus 1 lakh. Okay. And this I will be discounting at the market rate. So market rate is given how much? 12% here. So this becomes my effective interest rate. So 1.12, like how this 1.12 is coming, I believe you should be knowing about it. So like means if I'm investing 1 year today, so after the 1 year, how much I will be getting? 1.12. So that is the 12% on the 1 rupee. So that's why it is coming 1.12 raised to the power 1 because this is I'm discounting it at the end of the first year. So 1.12 second year. So this is the concept of the time value of money. I believe you should be knowing about it because this you would have studied or you will study um, in AFM. Okay. So now if you see,
my coupon rate it is 10% and my the discounting rate is 12%. So by this, which one is higher? So the 12% is higher. So means the 12% it is higher than my coupon interest rate. So that means I am discounting at a higher rate. Correct. So then, so this present value here it will be coming less than 1 lakh. So this is what I'm trying to say here. So just a minute, how much it will be coming? Uh, just a minute. So it will be coming. So it will be coming 95196. So this is less than your 1 lakh. So here why it is less than 1 lakh? Because so that means you are issuing at a discount because your market rate is 12%. That is your effective interest is more than your coupon rate. So that's why it is coming at the discount here. Okay. So this basic thing, the time value of money, you should be knowing about it. Um so it should be there in your blood. So normally just try to means my style is for this one the time value of money that is TVM. It is the equation like this because it becomes very simple to understand about it. So now coming back to this question, so here your coupon rate and your market rate both are same. So that's why here it your the par amount it will be your the present value. This it will be the same because the discount rate and the coupon rate both are same. Okay, so it will be 1000. Okay, so assuming the 8% here to be the market rate. Okay, so now evaluate the financial instrument in the hands of the both the holder and the issuer. So so quickly just we will prepare the diagram here. So A limited, and suppose it is given to the investor here. Okay, so first the investor is giving cash 1000, and on it A limited what it is giving. So it is giving the interest plus the principal amount. Okay, so this is the thing. So for A limited, uh, once this leg is completed, okay, this leg is completed, only this leg is pending. So for A limited, it will be a financial liability because it has to refund that money what it has received from the investor, and for investor, it will be a financial asset. Okay. So now just quickly read it. A financial asset is an asset where there is a contractual right to receive the cash. So this is in the future, the investor will be receiving. Okay. So, and to receive the cash was another financial asset from the another entity. For the holder, there is a right to receive the cash in the future, hence it will be classified as a financial asset. And for the issuer, there is a contractual obligation to pay in the future. However, the instrument is redeemed at the option of A. Okay, so they are just means it hasn't given this thing at the option of A because this you will be reading it in the studying it in the compounded financial instrument when the A is having the redemption rights. Okay, so then how this instrument will be classified? Okay, so all those things. So therefore, the instrument has a characteristic of both the equity and the liability. Such an instrument is regarded as a compounded financial instrument. See the unit 3 to understand for the compounded financial instrument. Okay, so this also just park it because this you will be covering in detail about it. So, but here, uh, if the holder is having the right, so then and that is also when it will become equity uh, because the holder is having a right to exercise the option. Correct. So uh, then it will become a compounded financial instrument for the A limited here. So financial liability plus your this one the equity will be coming here. Okay, for the issuer, but for the holder it will be in the financial asset. So that is also one catch point. This compounded financial instrument it is coming only on the liability side because what I've told you that on the liability you are having the equity and the financial liability. Correct. So, and on the asset side, you are having only the financial asset. So this CFI, it comes only for the issuer, not for the holder. So that is a one catch point. But yeah, we will do in detail when we will be coming to the unit 3, that is a chapter 3. So just park it for the time being.
Okay, so the creditors for the sales of the goods. So A Limited makes the same it is. So A Limited makes the purchase of the steel for its consumption in the normal course of the business. The purchase term provide for the payment of the goods at 30 days, interest payable at this one. So it is talking about the cash. So here also just try to make the diagram, then it will be very simple. So A Limited has received the steel. So this leg is completed. So that means there is no need to focus on this one. And now in the future, this A Limited has to pay the cash. And this the cash is like on this the interest is there, and if there is a delay, so uh, then the interest will be there. That is a penalty. Otherwise, uh, so the purchase terms provide for the payment of 30 days, and the interest payable is at 12% for the delay. Okay. So this is the thing. So this is in the future. So that's why this is a financial liability for the A Limited. Yeah. Whether in the future you need to pay the cash. So financial liability is any liability where there is a contractual obligation to deliver the cash or the other financial asset. The other financial asset is your equity. So here it's not this A Limited is not paying, is not delivering any equity. So this is not coming. So only the first this one will come to deliver the cash here. So in the above case, A Limited has entered into a contractual arrangement for the purchase of the goods at a fixed consideration payable to the creditor. So, a contractual arrangement that provides a payment in the fixed amount in the cash to the another entity meets the definition of the financial liability. Okay. Okay. So the contract for the exchange on unfavorable conditions. So it is talking about unfavorable conditions. So let's see. A Limited makes a borrowing for 10 lakh from the RBC Limited with a bullet repayment of 10 lakh at an annual interest rate of 12%. Now the company defaults at the end of the fifth year consecutively. A rescheduling of the payment and the schedule is made in the beginning of the sixth year onwards. The company is required to pay the 13 lakh at the end of the sixth year for the one-time settlement in lieu of the default in the payment made earlier. Actually, this is the question of the derecognition. So derecognition we will be covering in the another chapter here. Uh, uh, so just we are covering the first part here. So analyze the differential amount to be exchanged for the one time. So this is talking about this is talking about the derecognition concept. So just we will be focusing on the A point, and the B point we will be doing when we will be uh, doing this chapter of the derecognition. So does the above instrument meet the financial liability? Yeah. So of course it is, because so again, just try to draw the picture so then it will be easy for you. So A Limited, it has received the money 10 lakh, okay, from the RBC Bank, and in future, so this leg is completed. So that means no need to focus on this one. Only this leg is pending, where you will be paying the interest plus the principal amount in the future. Okay, like suppose if the default is not there, so then you need to pay. Uh, uh, so this is for the 6 years. Okay, this is for the 6 years. So for the 6 years, you need to pay the interest and the plus the principal at the end of it, because it is talking about the bullet repayment. So bullet means you are not paying in the installment. The principal amount you will be paying directly at the end, that is at the maturity. So here also you need to pay the cash. Okay, so for this one the cash, so outflow is there. So if I am talking from the A Limited point of view, so this will be a financial liability because there is outflow of the cash in the future. And for the RBC, it's a inflow, so it will be your financial asset for the RBC. Okay. So A Limited has entered into an arrangement wherein against the borrowing, A Limited has the contractual obligation to make the stream of the payment, that is including the interest and the principal. So this meets the definition of the financial liability. So I think this is very straightforward. Now coming to the definition of the equity instrument. Okay. So the equity instrument. So equity instrument again. This is completely opposite of your the financial liability. So here also
again. So just I will be just preparing it. Just a minute. Sorry, sorry. So here in hand, uh, your cash. So this is not there in this one, the equity instrument. Uh, so this is in future, okay, and the own instrument, own shares. So in future, uh, if you are so the cash thing will not be coming because for the cash it is coming under the financial liability here, okay, or the financial asset. So if the cash, if you are paying in the future, so that it is coming under the financial liability. So that means it will not come here. And here, if it is in the equity shares, then also it will not be coming here. Okay, this thing. Okay, so first just try to read these things, so then we can comprehend from this one. So as per the Ind AS 3211, the equity instrument is any contract that evidence a residual interest in the asset of an equity after deducting all of its liability. So this is talking about the residual interest. So like your equity shares. So if the company A Limited has issued the equity shares, so it will be coming here, equity shares, equity share capital in this one. Okay, because the residual interest in the assets. So this is after once you are paying, like means if suppose you are going into the liquidation and whatever means you need to pay to your external holders, and after repaying all the debts uh, to the external holders, so then whatever the asset is remaining, so on that uh, the the equity shares they are having the right. Okay, so this is what they mentioned here. As per the Ind AS 3216, and an instrument is an equity instrument if and only if both the conditions A and B are satisfied. So the instrument has no contractual obligation to deliver the cash. So that's what I've said. So in this the cash, if you are paying the cash, so that means it will not be coming under the equity instrument. It will be going under the financial liability. So to deliver the cash or the another financial asset to the another entity. Okay. To exchange the financial asset or the liability with another entity that are potentially unfavorable to the issuer. So the no, where there is no contractual obligation, you can say. So that means here your so what I have told you like here in the yesterday's class, or maybe like the in the first part. So this is the no obligation to the pay the cash. So if you are not having any obligation to pay the cash, then considering a you will be considering it as a equity instrument. So this is what it is trying to say, this thing, this first portion. So if you're not having any contractual obligation, so that is in the future. If you're not having any contractual obligation to pay the cash or the another financial asset to the another entity, okay, and to exchange the financial asset and the financial. So this is the derivative. So this one the derivative, and even in the derivative also, uh, you're not having any unfavorable positions. That is your forward contract, you can say. Okay. So in nutshell, you can think that if you are not having any obligation to pay the cash, so then it will be coming under your equity instrument. And now this is your this part, it is your own shares. Okay. So in the own share, what I've explained to you yesterday, that to classify under the equity instrument, so this the fixed to fixed test should be passed. Okay. So that means for the non-derivative leg, uh, that is to the deliver. So like here, if you are delivering the equity shares, your uh, own equity shares, okay, and that is also the fixed number of shares, fixed number of the shares. And if you are receiving the cash here, okay, and I am talking about from this angle, not from this counterparty. So A limited here, B limited here. So for the A limited, so this will be this we have already discussed yesterday also, but I am just repeating. So if here the non-derivative.
So this is a non-derivative instrument. This the example will come later on also. So for the non-derivative, you need to deliver. So this is the main thing. So deliver is the one, and even similarly for the financial liability also, it is a deliver, where in the financial liability it will be a variable number of own share. But here for the equity instrument, uh, it should be your variable number of the shares. Sorry, the fixed number of the shares. Okay. So this is a change from the financial liability to your equity instrument. So here, if it is a fixed number, so then it will be your uh, equity instrument, and if it is your variable number, so then it will be your financial liability. So the catch point here is to deliver. So that means the outflow should be there, deliver. Okay. And similarly for the derivative, the fixed to fixed test, it is there. So fixed to fixed test, because here you are paying the fixed, you are receiving the fixed cash. So this is the one leg, and the another leg is your fixed number of shares. So that's why it is the fixed to fixed test here in the derivative. Okay. And for the non-derivative only, you need to see the outflow, means the this leg, not this one, because here you need to see whether it's a fixed or not. On that basis, for the non-derivative, you will be deciding it. But for the derivative, you need to see both the legs. So like for here also, the fixed cash is there, and here also the fixed number of the own equity share should be there. Okay. So this is what, if it is a fixed to fixed, so if the both the legs are fixed, so then it will be your own equity, then it will be your equity instrument. Otherwise, it will be your financial liability or the financial asset. It depends. Like if in the option, so this one in the option, if it is like the return or purchased, correct. So this is a little bit tricky here. Uh, just a minute. So this will be covering here in detail. So for the option, if it is returned, so that means it will be liability. That means it will be coming under the liability side. And here, if this fixed to fixed test will, if it is getting satisfied, so then it will be your equity instrument. Okay. Otherwise, it will be your financial liability. But and in the purchase option, if the fixed to fixed test is satisfied, then it will be equity instrument. Or if it is not getting satisfied, so then it will be a financial asset. Okay. So this is the thing in the derivative side. And this is the same thing that in the equity shares, your own shares, don't consider the instruments, putable instruments. Okay, and similarly the instrument. So that is the paragraph 16A and 16B. This will be covering in the next another chapter. I think that is in the chapter 3, putable instrument. But yeah, just for the time being, what it is trying to say, that in the own share, these putable instrument will not be coming. Similarly, the instrument which are getting exercised only at the time of the liquidation, and which will be having the interest on the residual interest. Okay, only on the liquidation. So it will be covered under the 16 CA and 16D. Okay, so there the conditions are there. Similarly, here also the conditions are there. So broadly, in the own share, these will not be coming. Okay, so in the own share, what will be coming? Simple the equity shares. Simple the equity shares. The ordinary equity shares, you can say, that will be coming here. Okay, so 16A and 16B, this is what it is saying. Okay, so the contractual obligation, including one arising from the. So again, I am just repeating here. So here, what type of the instruments will be coming in the own, means in the equity instruments, where you are not having any obligation to pay the cash, correct? So that is the one thing. Plus, in this, the settlement is not happening in the own shares, correct? Second thing, if the settlement is happening in the own shares, so then fixed to fixed has to be seen. And the third thing is this one, the paragraph 16 and 16B. 16B, okay, that is a putable instrument, and the instrument which are coming, whose whose rights gets activated only in the liquidation, so 16C and 16D. And plus our plain, that is the ordinary equity shares, that will be your
equity instrument. So these are the four type for the equity instruments. So now the contractual obligation, including the one arising from the derivative financial instrument that will or may result in the future receipt or the delivery of the issuer's own equity instrument, but does not meet condition A and B, is not an equity instrument. Correct. So like this is what it is just repeating that if neither A condition is satisfied and nor B condition. So A's condition is like this one, the obligation to pay the cash you can avoid. So that is your obligation to pay the cash. Okay. So this is the A and this is the B. If both are not satisfied, so then it will not be your means either of it. Either of it is not getting satisfied, then uh, then it will not be equity instrument. So now just quickly see the example. So equity instrument issued. So this one, the ordinary equity shares which you have issued in the market. Warrants to issue the fixed number of the shares at a fixed price against the each warrant. So in the warrant, what you are doing? So in the warrant means you are issuing the warrant, and in the future you will be uh, that you will be uh, issuing the equity shares, and plus you will be receiving the cash against it. Okay, so like here it is mentioned, for this purpose, the rights, option, and the warrants to acquire a fixed number of the entity's own equity instrument for a fixed amount. Okay, so here in the warrant you need to see the fixed to fixed test, but here the one catch is there. It can be in the any currency. Okay, in the any currency. So this is a big catch here. So because in the this we'll be discussing in the chapter 3 in the equity and the financial liability in detail about it, but just park it, just try to remember the any currency, because if it is in the any currency, like suppose if uh, just I'm giving you one example. So here the A limited is there, like the warrant is there. So in the future, so warrant is issued, so in the future you will be receiving the cash from the warrant holder. Okay, in the cash, and here you will be issuing the own equity shares, the fixed number of the own equity shares. Okay, own equity shares. So in the warrant, this is from the warrant holder in the future. If the warrant holder exercises the warrants, then it needs to pay the cash to A Limited, and then the A Limited will be uh, issuing the fixed number of the own shares. So here in the any currency, that is so like here the if it A Limited is having a reporting currency of rupee, and here this warrant, it is given to the warrant holder. He resides in US, so it will be paying in the USD. So this is what, if it is paying in the USD, so then you need to convert it into the rupee, correct? And when you will be converting into the rupee, so that means it will get fluctuated, because here the whatever the spot rate will be there. So at the spot rate, you will be converting the dollar into the rupee. So that means this, if you think from the rupee point of view in the cash, so then it will be fluctuating. So it is not fixed. So So if you see, if it is in the rupee, so then it will be fluctuating because you are converting the dollar into the cash at the spot rate. Whatever the spot rate, it will be there when the dollar is received. So then you will be converting into the rupee. So this is the fluctuating. So like if it is not fixed in the rupee, so then this, it will not be equity instrument. So here the exception is created that okay, don't convert it into the rupee, but even if in the dollar also, whatever you are receiving the cash, if that is also fixed, so then also this is fixed and this is fixed, so then it will be your equity instrument. So that's why it is mentioned here any. So this we will be covering in the third chapter here. I think that is in the equity and the financial liability. But yeah, so there we will be discussing detail. But just I'm trying to give you a one flair, uh, that what is the any, what is the meaning of the any. So
So this is also the another tricky point here. So this is the exception. Okay. So for this purpose, the rights and the options of the warrants to acquire the fixed number of the own equity shares for the fixed amount of any currency are the equity instrument if this warrant it is issued to all the existing owners of the same class of its own equity own non equity derivative instrument. So that means सो ये जो कंडीशन है एनी वाला कि अगर ये अगर डॉलर में भी आपको मिल रहा है विच इज़ नॉट ए रिपोर्टिंग करेंसी देन ऑल्सो इट विल बी योर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड ये जो वारंट्स जो है ये आप उन होल्डर्स को दे रहे हैं उन होल्डर्स को इशू कर रहे हैं जो लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने अपने वारंट्स इशू किए. So this is the one class. So here you are issuing to the equity shareholders, to all the equity shareholders in the pro rata. Like pro rata means if इन्वेस्टर ए के पास 10 शेयर्स है एंड इन्वेस्टर बी के पास से 100 शेयर्स है तो प्रो रेटा के बेसिस पे आपने क्या कहते हैं ये वारंट इशू किए उनको. ठीक है. दिस इज टू ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ दैट क्लास. सो ये एज ए एक्सेप्शन तभी वर्क करेगा. ठीक है. So I hope this point is clear, but yeah, this we will be discussing uh, in chapter 3, I think. Okay. So but at least you have got a flair कि इसमें आपका ये फिक्स्ड भी नहीं है in rupee term, then also it is you are passing this fixed to fixed test provided this warrant it is issued to all the holders in that particular class on the pro rata basis, all the holders. So like here, the holder means your equity shareholders in that particular class, and it should be issued in the pro rata. Okay. Okay, and also for this purpose, the issuer's own equity instrument do not include the instrument that fall the features of the that have all the features and meet the conditions described in the paragraph 16a. So that is a putable instrument, and the 16c and 16d that is your the instrument which is getting exercised at the time of the liquidation. और उसमें जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी तभी उसको हम लोग क्या कहते हैं पुटेबल और जो लिक्विडेशन जो शेयर्स हैं उसको वो बोलेंगे. ठीक है. तो ओन इक्विटी में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया कि आपका ये इशू नहीं आएगा पुटेबल और ये इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा. सिंपल आप समझ के चले कि ओन इक्विटी शेयर्स में आपका केवल ये ऑर्डिनरी शेयर्स ही आ रहे हैं. ओके. और इवन जहाँ पे आपका ऑब्लिगेशन नहीं है पे करने का which you can avoid. So like the irredeemable preferences, so that also it will be coming under your own equity shares. But the putable मतलब ये वाले नहीं आएंगे पुटेबल और जो इंस्ट्रूमेंट जो केवल आपका 16C या 60D में आ रहे हैं वो नहीं आएंगे. बाकी छोड़ के सारे शेयर्स आपके ओन इक्विटी में आएंगे यहाँ पे. Okay, so contractual obligation, so this is done. So equity instrument issued, warrants, so this what I've explained you, and other instrument convertible into the fixed number of the equity shares for the fixed amount of the cash. So जहाँ पे आपके लेग में दोनों लेग में फिक्स्ड कैश है और फिक्स्ड आप नंबर ऑफ शेयर्स या फिर रिसीव करें तभी आप वो आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बनेगा. सो जो मैंने आपको ऑप्शन में एग्जांपल दिया कि परचेज अगर आपने परचेज कर रखा है ऑप्शन को परचेज कर रखा है कॉल ऑप्शन को. ओके. सो कॉल ऑप्शन का अगर आपने परचेज कर रखे तो आप यहाँ पे क्या करोगे कैश पे करोगे और आप इक्विटी शेयर्स रिसीव करोगे. ठीक है. सो अगर यहाँ पे आपका ये वेरिएबल है और ये आपका फिक्स कैश है. ठीक है. और ये फ्यूचर में हो रहा है दोनों लेग तो ये वेरिएबल है तो ये आपका क्या बन गया ये फाइनेंशियल एसेट बन गया. और अगर आपका फिक्स्ड है इक्विटी शेयर्स यहाँ पे तो फिर ये आपका ये ऑन इक्विटी शेयर्स मतलब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा. ठीक है. ये आपका अगर फिक्स्ड अगर हो रहा है इक्विटी शेयर्स ये लेग में तो फिर ये आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा. सिमिलरली अगर आपका परचेज्ड ये आपको क्लियर होना चाहिए. एक मैंने इसमें वीडियो बनाया हुआ है कि कॉल ऑप्शन जो टाइप्स ऑफ ऑप्शन है कॉल पुट वो क्या होते हैं राइट और परचेज में क्या जनरल एंट्री होती है वो एक बार आप वो वीडियो प्लीज़ रेफर करिए उससे आपको ये क्लैरिटी आएगी. परचेज अगर रिटर्न ऑप्शन है
return option on own shares, and this is also the purchase call option on own shares. ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे होगे, रिटर्न ऑप्शन दे रखा है परचेज्ड, सॉरी नॉट परचेज्ड, रिटर्न अगर पुट ऑप्शन है, रिटर्न पुट ऑप्शन है तो इसका क्या मतलब होता है कि आपको, अगर आप राइटर है तो आपको जो होल्डर रहेगा वो आपको ओन इक्विटी शेयर्स क्या कहते हैं बेच रहा होगा, ठीक है, और आपको इसके बदले आपको कैश देना पड़ेगा। तो यहाँ रिटर्न पुट ऑप्शन में इट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ द कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये आपका वेरिएबल है तो रिटर्न पुट ऑप्शन में इसका एक स्पेशल केस बनता है यहाँ पे, जिसमें आपको क्या कहते हैं ये लाइबिलिटी आता है, इसको ग्रॉस लाइबिलिटी बोला जाता है, ये आपको आ, उस चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये नहीं देखते हो कि अगर वेरिएबल है तो अ, क्या बोलते हो, वेरिएबल है तो फाइनेंशियल क्या बोलते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी रहेगा, बिकॉज ये रिटर्न है आपका तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा, और अगर फिक्स्ड है तो आपका यहाँ पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बनेगा। तो आप ये चीज़ नहीं देखते हो, सीधा इसमें आप ये फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करो, ये आपका सीधा ये लाइबिलिटी ही बनेगा, इट इज़ अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनेगा, और उसमें भी आपका एक स्पेशल कैटेगरी आता है ग्रॉस लाइबिलिटी, कि आप प्रेजेंट वैल्यू पे दिखा रहे हो उसको, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so no contractual obligation. So a key characteristics of the equity instrument is that they carry no contractual obligation throughout for any payment. So ये अगर आपका कोई contractual obligation नहीं है कैश पे करने का तो आपका वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बनेगा, जिसमें आप कोई सेटलमेंट अपने ओन इक्विटी शेयर्स में नहीं कर रहे हो, ठीक है। However, following type of instruments as an exceptions are equity classified even if they contain an obligation to deliver the cash or the other financial asset provided certain requisite criteria are met. So ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो हम लोग बाद में चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, पैराग्राफ 16A एंड 16B। उसमें कंडीशंस हैं, वेरियस कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगी तो वो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, दैट इज योर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इवन इन स्पाइट ऑफ, सो दिस इज लाइक योर एक्सेप्शन, कि आपका वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है लेकिन तब भी आप उसको क्या कहते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हो, बिकॉज आपने 16A और 16B की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। सो दिस इज योर स्पेशल केस एज एन एक्सेप्शन, and the instrument or a component of an instrument that contain an obligation for the issuing entity to deliver the holder a pro rata share of the net asset only on its liquidation. So अगर liquidation होगा तो जो मैंने आपको बोला यहाँ पे 16C और 16D कंडीशंस आती है, जो अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है इंस्ट्रूमेंट का तो वो आपका क्या बोलते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा, इन स्पाइट ऑफ कि वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होने के बाद भी उसको हम लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, क्योंकि वो 16C एंड 16D कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। So the nature of these instruments and the criteria to be met for the equity classification are explained in the greater in the unit 3, ठीक है, ये हम लोग यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे। एंड सेटलमेंट इन ऑन इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पे आपका जो ऑन इक्विटी शेयर्स है अगर आपको उसमें सेटल हो रहे हैं तो नॉन डेरिवेटिव में क्या होता है कि आपका डिलीवर देखना है, आउटफ्लो देखना है, और डेरिवेटिव में आपका डिलीवर भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है ऑफ ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। सो सेटलमेंट इन ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इज इक्विटी क्लासिफाइड ओनली इफ it is a fixed for fixed test, that is issue of the fixed number of the shares and the fixed amount of the cash or the other financial asset। ये डेरिवेटिव के बारे में बात करें जहाँ पे फिक्स टू फिक्स टेस्ट आ जाता है, ओके। एंड वेयर एन इंस्ट्रूमेंट वेयर एन एंटिटी एंटर्स इनटू ए नॉन डेरिवेटिव टू इशू ए फिक्स नंबर, सो डेट मीन्स जब आपका आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, ये आपका ए लिमिटेड है, और अगर आपका आउटफ्लो हो रहा है और यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स है ओन शेयर्स हैं अगर फिक्स्ड है, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है तो फिर ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, अदरवाइज अगर ये वेरिएबल है तो आपका ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी कहलाएगा। तो डिलीवर, ठीक है, यहाँ पे डिलीवर है, सो फिक्स नंबर ऑफ इट्स ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन एक्सचेंज फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द कैश, so it is an equity instrument. So just reading it again, where an entity enters into a non-derivative to issue a fixed number of, to issue, so that means the outflow here, fixed number of its own equity instrument in exchange for the fixed amount of the cash. So that means your inflow is your fixed or the fixed amount of the cash
ठीक है, ये कैश आ रहा है यहाँ पे, सो इट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, but this does not apply for the instrument that are the equity classified being a पुटेबल. सो पुटेबल और जो आपका 16 है, 16 भी और 16 से 16D जो है वो भी आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन वो आप ओन शेयर्स में आप उसको कैटेगराइज, उसको आप ओन शेयर्स में नहीं ट्रीट कर रहे हो यहाँ पे. ठीक है. however if the such contract contains an obligation for the entity to pay the cash, it also give rise to the liability for the present value. ये आपका ये जो चीज़ है ये आपकी रिटर्न पुट ऑप्शन के बारे में बात कर रहा है. रिटर्न पुट ऑप्शन, तो इसमें कोई आपका फिक्स टू फिक्स टेस्ट देखा नहीं जाता है, तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि इफ सच कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एन ऑब्लिगेशन फॉर द एंटिटी टू पे द कैश. ठीक है, कि आपका पुट ऑप्शन में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं आपके पास और आप यहाँ पे पे कर रहे हो कैश. ठीक है, पुट ऑप्शन में अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ. ठीक है, पुट ऑप्शन, तो होल्डर के पास है राइट है कि वो पुट कर सकता है शेयर्स. तो यहाँ पे होल्डर के पास राइट है, ये होल्डर हो गया, ये आपका इशूअर हो गया. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल रहा है, इफ सच कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एन ऑब्लिगेशन फॉर द एंटिटी टू पे द कैश. ठीक है, टू पे द कैश और द अनदर फाइनेंशियल एसेट, यहाँ पे कुछ और भी इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं इसके बदले. तो इक्विटी शेयर्स ऑफ से रिलायंस. ठीक है, अगर यहाँ पर रिलायंस होता है. ठीक है, सो इट ऑल्सो गिव राइज टू द लाइबिलिटी फॉर द प्रेजेंट वैल्यू of the redemption amount. For example, a forward contract entered into by an entity to repurchase the fixed number of its own shares for a fixed amount of the cash giving rise to a financial liability to be recorded at the present value of the redemption. So forward contract में क्या रहता है आपका अ, कि ये परफॉर्म होगा ही होगा. ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने क्या किया, टू परचेज ऑन इक्विटी शेयर्स. ठीक है, तो सेम यही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कि इशूअर जो है आपका, आपको सॉरी, इशूअर जो है एक मिनट, जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी. ये जो आपका ये जो इशूअर है, इशूअर जो आपको कैश देगा और यहाँ पे आपको ऑन इक्विटी शेयर्स मिलेगा. ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में. तो यहाँ पे आपको कोई फिक्स टू फिक्स टेस्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहे, तो ये आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही कहलाएगा. सो दिस इज ऑल्सो स्पेशल केस. और ये कैसे रिकॉर्ड होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिडम्पशन अमाउंट. ठीक है, तो सपोज ये हेयर आपका ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से मान लीजिए 1 ईयर का है कि 1 ईयर के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा. तो इसमें जो आप यहाँ पे सपोज मान लो 1 लाख पे कर रहे हो. ठीक है, 1 लाख पे कर रहे हो और इसके बदले आपको इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, मतलब आप इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं. ठीक है. तो ये 1 लाख को आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा यहाँ पे एट द बिगनिंग. सो प्रेजेंट वैल्यू, सो दैट इज योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो उस पर आपका ये रिकॉर्ड होगा. ठीक है, तो ये नॉर्मली रिटर्न पुट ऑप्शन और द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होता है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वेयर यू आर परचेजिंग द ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. तो इन दोनों में क्या हो रहा है, आपका इनफ्लो क्या आ रहा है, आप क्या रिसीव कर रहे हो, अपने ओन इक्विटी शेयर्स क्या कहते हैं रिसीव कर रहे हो. ठीक है, तो इसको ये आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी ही बनेगा. आ, आपका ये ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा. ठीक है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनेगा, आपका ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा. सो जस्ट remember this thing. I think this will be also we will be discussing in the unit 3. So all these are the nitty gritties ki these are the very small things uh, because the tutors sometimes they skip it. So an issuer of the non-potable, so non-potable means आपका कौन सा हो गया, आपका सिंपल ओन इक्विटी शेयर जो आपने इशू किए. दूसरा जो जिसमें ऑब्लिगेशन नहीं है, लाइक इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. सिमिलरली जहाँ पे फिक्स टू फिक्स टेस्ट कहते हैं पास हो रहे, तो वो सारे को नॉन पुटेबल बोलते हैं. ठीक है,
So non-putable ordinary shares assumes a liability when it formally acts to make a distribution and becomes legally obliged to the shareholder to do so. So this may be the case following the declaration of the dividend or when the entity is being wound up and and any asset remaining after the satisfaction. Okay, okay, just read it again. So an issuer of the non-putable ordinary shares assumes a liability when it formally acts to make a distribution and becomes legally obliged to the shareholders to do so. ठीक है. This may be the case following the declaration of dividend or when the entity is being wound up and any asset remaining after the satisfaction of the liability and becomes a distributable to the equity shares. तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपके जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी कब बनेंगे, जब आपका ऑब्लिगेशन आ जाएगा. सो ऑब्लिगेशन जैसे क्या हो गया कि फॉर द इक्विटी शेयर्स व्हेन यू अप्रूव इन योर एनुअल जनरल मीटिंग की डिविडेंड अब आपको पे करने, सो देन दिस डिविडेंड इट बिकम्स योर फाइनेंशियल लायबिलिटी. ओके. एंड सिमिलरली अगर लिक्विडेशन अगर हो जाता है, तो लिक्विडेशन अगर जब हो जाता है और उस टाइम पे फिर जो 16C और जो 16D वाला जो स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट है जो लिक्विडेशन पे एक्टिवेट होता है, तो वो फिर आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी में आ जाएगा. सो बिफोर द लिक्विडेशन इट विल बी योर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, बट वंस द लिक्विडेशन स्टार्ट्स, तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपका फिर जो 16C 16D को सेटिस्फाई कर रहा था वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगा. वो यही कह रहे हैं. तो जस्ट सी द एग्जांपल आल्सो कि व्हेन ए कंपनी proposes, so ये डिविडेंड के बारे में बोल रहे हैं कि व्हेन ए कंपनी proposes a dividend in its board meeting, no obligation arises because it becomes payable only post approval by the shareholders in the AGM. So however, when the dividend is approved by the AGM, by the shareholder in the AGM, the company has taken an obligation to distribute the dividend to its shareholders. Hence, it's a contractual obligation meeting the definition of the financial liability. Correct? एग्जाम्पल्स ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड द नॉन पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर्स जो मैंने आपको बताए थे. उसमें जैसे कि आपने सिंपल अगर आपने ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर जो इशू किए वो आ गया. सम पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स जो 16A 16B जो सेटिस्फाई करे वो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट आ गया. दे मीट द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया एंड आर नॉट क्लासिफाइड एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. बाय डिफॉल्ट वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, लेकिन आपने उसको एक्सेप्शन लेके कि जब वो 16A 16B की कंडीशंस अगर जब वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा. Similarly, some instrument that impose on the entity an obligation to deliver to the another party a pro rata share of the net assets of the entity only on the liquidation. तो जो इंस्ट्रूमेंट जो केवल लिक्विडेशन पे एक्टिवेट हो रहे हैं जिसपे जो 16C 16D कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, लेकिन जब वो 16C 16D की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो उसको फिर हम लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. ठीक है. दे मीट द रिक्विजिट क्राइटेरिया एंड आर नॉट क्लासिफाइड एज द फाइनेंशियल लायबिलिटी. And some type of the preference shares where the repayment and the distribution is at the discretion of the issuer. ठीक है. So that is your irredeemable preference shares. Irredeemable preference shares जिसमें आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यूअर पे है. ठीक है. प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल पोर्शन आपका क्या कहते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा. और सिमिलरली जो उसका जो डिविडेंड है, डिविडेंड भी अगर क्या कहते हैं इश्यूअर के डिस्क्रिप्शन पे है तो ये पूरा कंप्लीटली क्या कहते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा. ठीक है. दिस इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इश्यूअर. सो दैट मीन्स कि ऑब्लिगेशन टू पे द कैश इश्यूअर कैन अवॉइड. करेक्ट. तो वो उस कैटेगरी में जा रहा है. वारंट्स और द रिटर्न कॉल ऑप्शन. रिटर्न कॉल ऑप्शन, सो रिटर्न कॉल ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं. that allows the holder to subscribe for or purchase a fixed number of just a minute, इसको एक बार रब कर देते हैं. So return or the, warrants or the return call option that allows the holder to subscribe for or purchase a fixed number of the non-putable ordinary shares
in the issuing entity in exchange for the fixed amount of the cash or the another financial asset। ठीक है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था कि रिटर्न कॉल ऑप्शन और वारंट में जहाँ पे होल्डर के पास राइट्स होते हैं उसको एक्सरसाइज करने का। ठीक है, जैसे ही वो जब एक्सरसाइज करेगा तो इसमें क्या होगा, फिर आपको क्या बोलते हैं, कैश मिलेगा और आपको इक्विटी शेयर्स अपने देने पड़ेंगे। तो दोनों लेग आपको देखने पड़ेंगे। ये दोनों फिक्स्ड होने चाहिए कि फिक्स्ड कैश होना चाहिए, और ये फिक्स्ड आपका क्या कहते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स होना चाहिए। तो उसमें क्या एक्सेप्शन था वारंट्स के लिए, अगर वो इट इज इशूड टू ऑल द holders in the pro rata, and that is a holder of the non derivative इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक कि अगर आपने जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर आपने प्रोरेटा बेसिस पे ये वारंट इशू किए, सबको किए मतलब प्रोरेटा बेसिस पे, तो यहाँ पे करेंसी कुछ भी हो सकती है, मीन्स एनी करेंसी, बट इन दैट करेंसी दैट अमाउंट शुड बी फिक्स्ड। तो वहाँ पे आपको कन्वर्जन में नहीं देखा जाएगा, कन्वर्जन द रिपोर्टिंग करेंसी नहीं देखा जाएगा। So basis the above definition of the equity and the characteristics of such instruments, let's evaluate some typical form of the instrument that may be issued and how they are classified. So preference share is a class of the shares issued by the Indian companies whose terms may provide for the redemption at a predetermined amount with a fixed return, which may be cumulative or the discretionary. So in determining whether a preference share is a financial liability or an equity instrument, an issuer assesses the particular rights attached to the share to determine whether it exhibits the fundamental characteristics of the financial liability or an equity instrument as explained in the following table। तो अभी प्रेफरेंस शेयर्स की अलग अलग कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा या फाइनेंशियल इक्विटी बनेगा, या फिर उसमें दोनों कंपोनेंट अगर आ जाते हैं तो इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी का, तो फिर ये आपका क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। सो रिडम्पशन एट ए स्पेसिफाइड डेट, रिडम्पशन एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर्स, ये दोनों के केस में क्या कहते हैं, जो इश्यूर है ही कैन नॉट अवॉइड टू पे द कैश, तो ये आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट के पर्सपेक्टिव से फिर ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज रिटर्न हियर। redeemable preference shares, redeemable means you need to pay the preference, you need to reimburse the principal amount। ठीक है, तो यहाँ पे रिडेम्पशन क्या हो रहा है कि जो एक कंपलसरी रिडेम्पशन होगा स्पेसिफाइड डेट पे, और या फिर दूसरा रिडेम्पशन जो एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर होगा। तो यहाँ पे भी फिर आपका, अगर वो होल्डर जब एक्सरसाइज करेगा तो यू नीड टू पे द कैश, द इश्यूर नीड टू पे द कैश, सो इश्यूर कैन नॉट अवॉइड इट। ठीक है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा। सो दिस कंटेन्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी बिकॉज द इश्यूर हैज एन ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर द फाइनेंशियल एसेट टू द होल्डर ऑफ द शेयर, द पोटेंशियली inability of an issuer to satisfy an obligation to redeem a preference shares when the contractually required to do so, whether because of the lack of the fund or the statutory restriction or the insufficient profit of the reserve, does not negate the obligation। कि अगर आप ईश्वर की फाइनेंशियल सिचुएशन अगर अच्छी नहीं है, वो पे नहीं कर पाए, तो वो भी कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन तब भी उसको आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी ही बोलना पड़ेगा। तो इसमें ईश्वर की कैपेबिलिटी नहीं देखी जाती है, करेक्ट। तो यहाँ पे वो चीज़, ये पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि कैपेबिलिटी के बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे इश्योर ही कैन नॉट अवॉइड कि ये मेरे को पे कैश नहीं करना होगा। इफ यू कैन नॉट अवॉइड, सो ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा। रिडम्पशन एट द ऑप्शन ऑफ द इश्योर, ये जो चीज़ है एट द ऑप्शन ऑफ द इश्योर, ये आप क्या कहते हैं इन डिटेल क्या कहते हैं, वो यूनिट 3 में पढ़ेंगे, इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप ऑप्शन क्या है, इश्योर के पास है कि ठीक है भाई, सपोज मान लीजिए इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है कि यहाँ पे, लेकिन होल्ड इश्योर के पास एक ऑप्शन है कि ठीक है अगर उसका मन किया तो वो प्रिंसिपल अमाउंट को रिफंड कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इश्योर के पास है कि वो एक्सरसाइज भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो ये आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। An option of the issuer to redeem the shares for the cash does not satisfy the definition of the financial liability because the issuer does not have a present obligation to transfer the financial asset to the shareholder, so hence classified as the equity instrument। An obligation may arise of, however, when the issuer issuer of the shares exercises its option।
usually by formally notifying the shareholders of an intention to redeem the shares, at which time the this instrument shall be reclassified from the equity to the financial liability. ठीक है कि अब ये जब तक वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता इश्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। जैसे ही इश्योर ने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया था, वो उसकी एक लाइबिलिटी बन गई कि हाँ भाई अब मेरे को कैश पे करना पड़ेगा, तो फिर ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है। रिडीमेबल। अब ये नॉन रिडीमेबल की बात कर रहे हैं, तो नॉन रिडीमेबल जो आपका, जहाँ पे इनडेफिनेट लाइफ हो गई कि आपको प्रिंसिपल नहीं पे करना है, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल एट द ऑप्शन ऑफ द इशूर आ गया। सो जस्ट ये वही रिपीट होगा आगे। सो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मे बी इशूड बाय द फॉरेन सब्सिडरीज और फॉरेन ब्रांचेस और द फॉरेन एसोसिएट्स और फॉरेन जॉइंट वेंचर्स, joint operations or the foreign joint ventures. In this case, the appropriate classification is determined by the other rights that attach to them. The classification is based on an assessment of the substance of the contractual arrangements and the definition of a financial liability and the equity instrument. So when the distribution to the holder of the preference shares, whether the cumulative or non-cumulative, are at the discretion of the issuer, then it will be the equity instrument. ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोले कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है, इट इज इशूड बाय द सब्सिडरी और द जॉइंट वेंचर और द ब्रांचेस और द जॉइंट ऑपरेशंस, सो बट इट कैन बी इशूड बाय एनीबडी। लेकिन यहाँ पे वो एग्जांपल इनका ले रहा है। द क्लासिफिकेशन ऑफ ए प्रेफरेंस शेयर एज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और ए फाइनेंशियल लायबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय हिस्ट्री ऑफ मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, कि हाँ भाई ठीक है हिस्ट्री में आपने क्या पे किया है, वो सब चीज़ों से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आपका इंटेंशन से भी नहीं पड़ता है, आपका पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट क्या भाई ठीक है अगर आपने क्या कहते हैं सॉरी इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स, तो उससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। द अमाउंट ऑफ द इश्योर रिजर्व, उससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। द इश्योर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पीरियड, उससे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एंड एबिलिटी और इनएबिलिटी ऑफ द इश्योर टू इन्फ्लुएंस द अमाउंट, उससे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। Hence the contractual term determines the nature of the instrument. Any historical trend or the ability of the issuer does not affect the classification of an instrument as the equity or the financial liability. Okay, so distribution on the preference shares. So other than the terms of the redemption of the financial instrument, now it is talking about the dividend one. वो अभी तक उसने प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में बात किया ऊपर, और अभी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, डेट इज योर डिविडेंड। ठीक है। So another important point for the consideration is whether the company has an obligation to make the payment of the dividend, whether the dividend on the such preference shares are the cumulative or the non-cumulative। ठीक है। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब हो गया कि सपोज आपने पे नहीं किया, इशू ने पे नहीं किया, तो वो एक्यूमुलेट होता रहेगा जब तक वो पे नहीं करेगा। और नॉन क्यूमुलेटिव जैसे कि आपने जिस ईयर में पे नहीं किए, तो वो आगे भी पे नहीं करेगा उस पर्टिकुलर ईयर का डिविडेंड। Correct. So where the dividend are at the discretion of the issuer. So this is akin. Akin means similar to the equity instrument कि यहाँ पे issuer के पास discretion है। ठीक है। So obligation not to pay the cash. However, where the instrument itself is redeemable, the obligation to pay still exists, but only to the extent of the redemption of the value, not the dividend. तो ये आपका compounded financial instrument आ गया कि जो आपका प्रिंसिपल पोर्शन है और ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड आपका इश्यूअर के डिस्क्रिप्शन पे है और ये आपका ये मैंडेटरी है, तो फिर ये आपका कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो इसमें से कैसे आप अमाउंट को डिटरमिन करते हैं इक्विटी के लिए और क्या कहते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी के लिए, वो हम लोग वो यूनिट 3 में देखेंगे। When the dividends are cumulative but payable only on the liquidation. So one need to assess the key terms of the instrument to check if the entity has a contractual obligation. Where no contractual obligation exists to pay, ठीक है, so such preference shares may themselves be irredeemable and the dividend on such shares, even if cumulative, the entity may be under no obligation to pay unless upon the liquidation, then such preference shares may be classified as equity। ठीक है। तो ये इक्विटी कहलाएगा कि अगर आपका डिविडेंड भी एक्यूमुलेट हो रहा है और वो डिविडेंड इश्यूअर को पे करना पड़ेगा ओनली एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन, अदरवाइज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इश्यूअर, तो फिर ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। एंड व्हेन द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट, तो फिर ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा इन केस फॉर दैट पर्टिकुलर डिविडेंड के बारे में। अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है डिविडेंड, तो वो
पोर्शन आपका डिविडेंड वाला आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा. सो इन द केस where the preference shares are not redeemable, it is like an equity instrument, but they are entitled to a dividend which is payable such that the entity does not have any unconditional right to defer. To defer the payments. Then this provides the shareholders with the lender's return on the amount invested. This obligation is also not negated. Okay. To unable to pay the such dividend, so therefore the obligation to pay the dividend meet the definition of the financial liability. तो यहाँ पे जो डिविडेंड वाला जो है वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा, और जो प्रिंसिपल है क्योंकि इट्स इरिडीमेबल, सो दैट मीन्स यू कैन अवॉइड टू पे द कैश, तो ये आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा. तो ये दोनों मिला के आप क्या बन गया, फिर ये सी एफ आई बन गया, कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. So the instrument in such case shall have a two components: financial liability represented by the dividend and the equity component represented by the issue price. So such instruments are overall classified as a compounded financial instrument, and each of the component as mentioned above are accounted separately. ठीक है. So एग्जांपल देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स विद द नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड. तो नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड है, तो ये हेडिंग से पढ़ के ये लग रहा है कि ये डिविडेंड वाला जो पोर्शन रहेगा वो आपका इक्विटी रहेगा, और प्रिंसिपल अमाउंट को फिर देखते हैं क्या रहता है. सिल्वर लिमिटेड इशूड द इरिडीमेबल, तो इरिडीमेबल हो गया, तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका ऑब्लिगेशन टू पे द कैश नहीं है इशूअर का, तो फिर ये भी आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया. So with a face value of 10 and a premium of 90, so these shares carry a dividend of the 8%. However, the dividend is paid only when the Silver Limited declares the dividend on the equity shares. Analyze the nature of the component. तो ये आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, आप ये पढ़ सकते हैं. सो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है. सो अल्टीमेटली आपका जो प्रिंसिपल और डिविडेंड दोनों एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इशूअर है. सो डेट मीन्स द इशूअर कैन अवॉइड टू मेक द पेमेंट ऑफ इन द कैश. ठीक है, तो ये आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा. यहाँ पे आपका कोई ऑन शेयर्स में कोई सेटल नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो फिक्स टू फिक्स टेस्ट वाला यहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहा है. ओके, अब यहाँ पे कमिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड इन द ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बट क्लासिफाइड एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. सो नॉन डेरिवेटिव आपको क्लासिफाई फाइनेंशियल लायबिलिटी कब होगा, जब आप क्या कहते हैं, फिक्स टू फिक्स टेस्ट क्या कहते हैं आपको, फिक्स टू फिक्स टेस्ट आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. ठीक है, तो एक बार हम लोग पढ़ भी लेते हैं. सो नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, a contract that will be settled in the variable number of own shares whose value equals a fixed amount in the financial liability, because the entity is under an obligation to pay a fixed amount that is settled through the equity instrument. So similar to the settlement in the currency. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कि जो कैश वाला जो लेग है, ओके कैश वाला है. सो जो कैश वाला जो लेग है वो आपका फिक्स्ड है, और यहाँ पे आपका वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है, तो इसलिए ये आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी रहेगा. ठीक है, दिस इज फॉर द नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इट इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, क्योंकि ये क्या बोले, वेरिएबल कैसे होगा कि जो भी एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी जो ये फिक्स कैश है उसके इक्विवेलेंट जो आपके वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे. से मान लीजिए मैच्योरिटी में अगर आपका 120 है, ठीक है, और ये आपका फिक्स्ड कैश से मान लीजिए ये 1,20,000 है. ठीक है, तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपका क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, 1,000 हो गया, 1,000 शेयर्स हो गया. ठीक है. सो ये फिक्स कैश हो गया, और वही फिक्स नंबर यहाँ पे भी फिक्स कैश है, लेकिन ये आप करेंसी मीन्स आप शेयर्स के फॉर्म में डिलीवर कर रहे हो. तो अगर ये क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस का 130 हो जाता है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आपके वेरी करता है. ठीक है, तो इसलिए ये आप फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगा.
So a contract that will be settled in the variable number of the entity's own share whose value equals a fixed amount of the cash. तो ये यहाँ पे आपका फिक्स्ड कैश ही है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ही है, लेकिन आपका यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो वेरी कर रहा है मार्केट प्राइस से। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये आपका नंबर ऑफ शेयर्स क्या कहते हैं वेरी कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि हुज वैल्यू इक्वल्स ए फिक्स्ड अमाउंट, ये वैल्यू आपका न्यूमरेटर फिक्स्ड है, is a financial liability because the entity is under an obligation to pay a fixed amount that is settled through the equity instrument। कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जो आपको पैसा मिला है 1,20,000 और वही आपको पे करना है, लेकिन आप यहाँ पे पे किस फॉर्म में कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में कर रहे हो यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ पेइंग द कैश बैक, यू आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ द इक्विटी शेयर्स, और वो भी इक्विटी शेयर्स जो है उसका जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो वेरिएबल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका मार्केट जो प्राइस है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, सो हेयर यू आर यूजिंग योर इक्विटी शेयर इन द करेंसी फॉर्म। तो यहाँ पे ये बोला वेयर द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज ट्रीटेड एज ए करेंसी। तो यहाँ पे जो आप कैश जो पे मतलब जो आपको 1,20,000 जो वापस करना है वो आप वेरिएबल ऑफ इक्विटी शेयर के फॉर्म में क्या कहते हैं आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इक्विटी शेयर्स को आप यू आर यूजिंग इट एज ए करेंसी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या मतलब होता है इज ट्रीटेड एज ए करेंसी। ठीक है, सो बिकॉज द एंटिटी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे ए फिक्स्ड अमाउंट दैट इज सेटल्ड थ्रू द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू द सेटलमेंट इन द करेंसी। ओके, तो ये नॉन डेरिवेटिव के बारे में बोल रहा है, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी आपका बन जाएगा। क्यों? बिकॉज ये आपका यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है। So similarly, a contract that will be settled in a fixed number of own shares, but the rights attaching to those shares will be varied so that the settlement value equals a fixed amount or an amount based on the change in the underlying variable. So is a financial asset or the financial liability। ये थोड़ा सा दे हैवंट गिवन एनी एग्जांपल, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स ही आप डिलीवर कर रहे हो, लेकिन उसके राइट्स क्या बोलते हैं, उस शेयर्स के जो राइट्स है वो वेरी कर रहे हैं। तो वो वेरी करने की वजह से आप यहाँ पे फिक्स टेस्ट क्या कहते हैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा या फिर फाइनेंशियल एसेट बनेगा। फाइनेंशियल एसेट कब बनेगा? जब आप वो शेयर्स को आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, और फाइनेंशियल लायबिलिटी कब बनेगा? जब आप वो अपने शेयर्स को आप डिलीवर कर रहे हो। सो दिस यू कैन इग्नोर ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे इसका कोई एग्जाम्पल भी ऐसे नहीं दे रखा है, लेकिन बट बस जस्ट कीप इन द माइंड, जस्ट मेमोराइज इट कि यहाँ पे आप फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स भी दे रहे हो, लेकिन उसके जो दे रहे हो या रिसीव कर रहे हो, लेकिन उसके राइट्स जो हैं उस शेयर्स के वो वेरी कर रहे हैं। ओके, the derivative contract, a contract that will be settled in a variable number of the shares, own share whose value equals an amount based on the changes in the underlying variable, is a financial asset or a financial liability। उसका यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ये क्या, इसका क्या मतलब बोलना चाह रहा है वो। एंड an example is a return option to buy the gold if the exercise if exercise is settled net in the own equity shares by entity delivering as many of the number of as many of those instrument as are equal to the value of the option contract। तो एक बार ये सिंपल मैं बता देता हूँ कि रिटर्न ऑप्शन क्या बोल रही है। एन एग्जांपल इज रिटर्न ऑप्शन टू बाई द गोल्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज मान लो संभव है उसको गोल्ड मिल रहा है, फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स मिल रहा है गोल्ड से, मान लो 1 kg। ठीक है, और इसको यहाँ पे कैश पे करना है। इफ एक्सरसाइज यहाँ पे कैश के बदले कि वो अपने इक्विटी शेयर्स देगा, ओन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, संभव के इक्विटी शेयर्स होंगे वो देगा। तो सेटल्ड नेट सेटल्ड नेट है, तो ये नेट है, तो डेट मीन्स ये ग्रॉस सेटलमेंट नहीं है। तो ये आपका केवल एक ही लेग आएगा। से मान लो ये वैभव से अगर ले रहे हैं और ये से मान लीजिए कि गोल्ड का यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस अगर है से 1 kg है, से मान लीजिए 1 मिलियन है और 10 मिलियन है, 10 मिलियन रुपी है। ठीक है, सो 10 मिलियन रुपी है। तो
ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। अगर नेट सेटल होगा तो इसमें क्या होगा, अगर ये प्राइस एक्सरसाइज मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी अगर इसके ऊपर चला गया, से मान लीजिए 11 मिलियन चला गया, तो संभव के लिए ये क्या कहते हैं प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिटेबल। बिकॉज अगर आप यहाँ देखो कि संभव के पास राइट्स है कि वो अ, क्या बोलते हैं, संभव के पास राइट्स है कि वो कि 10 मिलियन में वो गोल्ड को परचेज कर सकता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है 1 मिलियन का, तो 1 मिलियन के इक्विवेलेंट जो इक्विटी शेयर्स रहेगा कि उस टाइम पे जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा इक्विटी शेयर्स का उसका, से मान लीजिए अगर ये 100 चल रहा है, तो आपका कितना हो गया 1 मिलियन में नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएंगे, 6 है ना, सो 10,000 शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो 10,000 शेयर्स आ गए, तो संभव अपना शेयर्स रिसीव करेगा वैभव से, जो वैभव यहाँ पे जो काउंटर पार्टी है वी से, वैभव से। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड एज योर नेट सेटलमेंट। अगर सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पे, अगर ये 10 मिलियन के ऊपर चला गया, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 11 मिलियन चला गया, तो संभव को प्रॉफिट हो गया, तो 1 मिलियन वो रिसीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ द इक्विटी शेयर्स। और अगर सपोज मान लीजिए यही अगर 8 मिलियन चला गया, तो वैभव के लिए प्रॉफिट हो गया, तो वैभव संभव वैभव को देंगे 2 मिलियन रुपी, और वो भी इक्विटी शेयर के फॉर्म में सेटल हो रहे हैं। और सपोज मान लीजिए उस टाइम पे इक्विटी शेयर का प्राइस 100 है, तो डेट मीन्स 20,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स क्या कहते हैं संभव वैभव को डिलीवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कैसे चेंज हो जाता है। तो दैट्स व्हाई मींस इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू कि ग्रॉस सेटलमेंट और नेट सेटलमेंट क्या होता है। सो एन an example is a written option to buy the gold that if exercise is settled net in the entity's own instrument by the entity delivering as many as those instrument as are equal to the value of the option contract। ठीक है। तो ये रिटर्न ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सो रिटर्न ऑप्शन में क्या होगा कि अगर ये जो मैंने आपको बोला ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, ये जो एग्जांपल जो मैंने बनाया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया। रिटर्न ऑप्शन में क्या होगा कि वैभव जो है गोल्ड वो बेच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और फिर संभव उसको इक्विटी शेयर्स देगा। तो यहाँ पे रिटर्न ऑप्शन में ये कब होगा, वैभव कब क्या कहते हैं इसको एक्सरसाइज करेगा, जब वैभव के लिए प्रॉफिटेबल होगा। और ये प्रॉफिटेबल कब होगा, जब इसका प्राइस जो गोल्ड का प्राइस है वो 10 मिलियन के नीचे चला जाए। तो सपोज यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल लिया है 8 मिलियन वाला, कि 10 मिलियन से अगर 8 मिलियन चला गया, तो वैभव का प्रॉफिट हो जाएगा, और ये फिर आपका नेट सेटल हो रहा है, तो फिर ये वाला आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। और अगर 10 मिलियन के अगर ऊपर है, तो वैभव भी ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो ये वाला एग्जाम्पल नहीं आएगा। तो लेकिन ये वाला जो मैंने एग्जाम्पल जो बनाया ऊपर वाला, जिसमें दोनों जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, और रिटर्न ऑप्शन में क्या हुआ कि ये एक्सरसाइज तब भी होगा जब वैभव के लिए प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कब हो रहा है इन दोनों सिचुएशन में, इस वाले 8 मिलियन वाले में हो रहा है। ओके। सो ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू बी सेटल्ड इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू बी सेटल्ड, ये नॉन डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। सो ए लिमिटेड इन्वेस्ट इन ए कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स issued by its subsidiary B Limited 1,000 each, 10 face value, 990 premium under the term of the instrument, each CCPS, it's a compulsory convertible है, ठीक है। So under the terms of the instrument, each CCPS is compulsory convertible into one equity share of B Limited at the end of the 5 year. Such CCPs such CCPS carry the dividend at 12% payable only when declared at the discretion of the B Limited। ठीक है, तो ये आपका पूरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो आप यहाँ पे आपका जो ऑब्लिगेशन टू अवॉइड द कैश नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका क्या रहा है कि जो प्रिंसिपल है
वो आप इक्विटी शेयर के फॉर्म में सेटल कर रहे हो। और अगर आप इक्विटी शेयर के फॉर्म में सेटल कर रहे हो और यहाँ पे आपका फिक्स टू फिक्स टेस्ट वाला कंडीशन आ गया, तो अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर ये आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया। और सिमिलरली जो आपका डिविडेंड पोर्शन जो है वो भी आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि ये डिस्क्रिशन एट द डिस्क्रिशन ऑफ इशूअर है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल पोर्शन है इसमें दूसरा कंडीशन अप्लाई हो रहा है फिक्स टू फिक्स टेस्ट वाला, बिकॉज यहाँ पे आप जो सेटल कर रहे हो आप ओन शेयर्स में सेटल कर रहे हो। ठीक है, पूरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया। So B Limited has issued the CCPS which provide for the conversion into the fixed number of the shares, that is the one equity share, and non-cumulative dividend. So applying the definition of the equity under the Ind AS 132. Okay. So applying the definition of the equity under the Ind AS 32, there is no contractual obligation to deliver the cash or the other financial asset. Dividends are payable only when they're declared and hence at the discretion of the issuer. So this is what we have also interpreted. So it's a dividend is a equity instrument because here there is no obligation to pay the cash. And for the equity shares, you need to see the another condition, that is another this thing fixed to fixed test. So conversion into the fixed number of the shares. So that's why it meets the definition of the equity instrument and shall be classified as such in the books of B Limited. Okay, then coming to the next one. So the target limited took a borrowing from the Z Limited settlement in the variable number of the shares. So if the settlement is happening in the variable number, so then it means from the heading it means that it's a financial liability because the variable number of the shares are there. So Target Limited took a borrowing from the Z Limited for 10 lakh. Okay, so quickly just I am drawing the picture here also. T Limited and the Z Limited. So Z Limited has given the money to Target 10 lakh. Okay, now we need to see what is this one. So Z Limited enters into an arrangement with the Target Limited for the settlement of the loan against the issue of a certain number of the shares of the Target Limited whose value equals the 10 lakh. So for this purpose, the fair value per share to determine the total number of the shares to be issued shall be determined based on the market price of the share of the Target Limited at a future date upon the settlement. So on the settlement date, the number of the shares will be given. So that means the amount is constant here in the numerator. Then whatever the market price is there, like suppose X is the market price, so then this number will be your Y. So like suppose if it is like your rupees 10 at the settlement date, whatever the market price is there, so then this will be your 1 lakh number of shares. So that means it's a variable number of shares. So if it's a variable number of the shares in the future, and then it's a financial liability for the T Limited, and for the Z Limited, it is a financial asset. So it is receiving the variable number of the shares, correct? Of the variable number of the own shares of the T Limited, of T Limited. So here it can be, you can say this leg is already performed or it will be performed. But I think if you presume so it's a perform, so that means you will not be focusing on this one. If both are not performed, then also it's having the same classification, because here you are the first step, that is a financial instrument. So it's a financial instrument because it's a cash and this one is a equity shares. So it will not impact so much. Yeah. Okay. And this is a comparison of the financial asset, financial liability, and the equity. I think this is straightforward. This you can also read yourself. But yeah, it's a very straightforward things. Then the last portion. Uh, okay, how much is the time? Just a minute. I'm just checking. Okay, so maybe we can quickly complete this thing in within 10 minutes. So for me, this is very important, like the scoping and the de-scoping. Uh, but yeah, uh,
So like it's very interesting. Like if you first, it should be the financial instrument. Then only you will be going for the de-scoping, like the scoping out. If in the beginning itself it is not a financial instrument, so then that instrument will not be coming in this one. So then why then the scoping out will be there, correct? So that is step one. Here it should be a financial instrument. Then only this is scoping out will be performed here. Scoping out means you are telling that okay, so on this particular financial instrument, which the transaction which is a financial instrument, on this uh, it is coming under the purview of the this IS 32 or IFRS Ind AS 32 and Ind AS 109, but due to the scoping out, it is going into the another standard. That standard is capturing that thing. So that is a logic, but yeah, just we will try to follow this logic. But in between, some dots are missing. Uh, let's see. Okay. So like first, it is talking about the interest in the subsidiaries, associates, and the joint venture that are accounted for in accordance with the Ind AS 110. Ind AS 27, Ind AS 28, that is for the associate and joint venture. Okay, so it is talking about like suppose A Limited, just I'm giving you the background also here side by side. So A Limited, uh, it is having a stake in B Limited, say it is owning uh, 60% of the shares of B Limited. Okay, so in the balance sheet of A Limited in the separate financial statement, just I'm writing in the short forms SFS, separate financial statement. So A Limited will show under the asset in the T format. It is showing the investment in B Limited. Correct. So normally, like how it goes, like slowly, um less than 20%, then it is for like your trading purpose. Then if it is 20 to 50%, then it will become your associate or the joint venture. And then if it is more than the 50%, then it is your subsidiary, correct? Normally. So but now the control definition is changed. So but yeah, but this still it exists. If you're owning more than 50%, then it can become your subsidiary. Correct. So that we will see later on once we will be covering the uh, NDS 110. So there this control definition is also there. So so less than 20%. So normally here like so it is talking about the subsidiary and the associate and the joint venture. Correct. So that means it is starting with this point, not with this point. So for this point, still it is covered under the financial instrument Ind AS 109. So where you will be following the fair value through P&L normally. Okay. So first thing, this investment in the B Limited by the A Limited, it is a financial instrument. This we have checked and number of times. That is the equity shares, correct? So equity share it is owning in hand right now. So now first, so first step, this is what I've said you. Like means first, it should be financial instrument. Then only the scoping out from the this particular standard will be there. So if it is financial instrument, so now this we have checked. So it is a financial instrument, correct? So now it is talking about the scoping out because for this 20 to 50% and the 50% more, that is for the associate and joint venture, and for the subsidiary we are having a specific accounting standard, so they it will be dealing in it, correct? So interest in the subsidiary, associates, and the joint venture that are accounted for in accordance with the Ind AS 110. So this is a consolidation CFS accounting standard. And for the separate, you are having a Ind AS 27 separate financial statement, and Ind AS 28, that is for the associate and the joint venture. However, in some cases, the Ind AS 110, 27, and 28 require or permit an entity to account for an interest in the subsidiary, associate, or joint venture in accordance with some or all of the requirement of this standard. So sometimes what happens, uh, in like normally you are having the fair value through P&L, the accounting, then at cost, okay, uh, the net cost, and I think then it is at the FEOCA also.
Okay, so these are the three type of the accountings are there. But yeah, so normally this FVTPL it is coming from the IFRS Ind AS 109. You can say. So it is saying that sometimes this this particular accounting standard, this like 110 and the 27, it says that okay, you can go for the accounting stand. You can refer the accounting standard 109 also. So if you are referring the accounting standard 109, so then this FETPL will be there. Correct. So this we will cover later on, but yeah, just I'm giving you the one high overview about this thing. So this is a very interesting case. So entities shall also apply this standard. This standard means the Ind AS 109 to the derivatives on an interest in the subsidiary, associates, or the joint venture, unless the derivative that meets the definition of the equity instrument of the entity in the Ind AS 32 financial instrument. Correct. So, uh, so like if you are having a derivative, like so on the derivatives, so the derivatives on these derivatives on these investments, you will be following the Ind AS 109 or 10 Ind AS 32. So that is the financial instrument accounting standard. And here, if it is, that is the one thing, and otherwise, uh, if it is, if this derivative here the condition is getting satisfied of the equity instrument, so then it will be equity instrument. Yep. Okay. So now the rights and obligation under the lease, Ind AS 116 applies. However, rights and obligation under the leases to which the Ind AS 116 applies. So okay, for the leases, this Ind AS 116 is applicable. So financial lease receivables, so net investment in the financial lease, and the operating lease receivables recognized by the lessor are subject to the derecognition and the impairment. So um, normally in the lease what happens? So like A limited and B limited. A limited is giving the machinery on lease, so say it has given the machine. Then the B limited will be like machine. It is given for the 5 years. Okay. So and here the B limited will be giving the money on the annual basis. So here the cash it will be received. So if both are outstanding, this both the legs, so you cannot say it's a financial instrument, correct? Because this leg, it's a non-financial item, so it's not a cash or the equity instrument. But if this is performed, like the A limited has already given the machine to B limited, then so this leg is already performed, so then only this leg is outstanding, correct? So that means uh, then it will become a your for B limited it will become a financial liability, and for A it will become your financial asset, correct? So, so this is the case. So uh, in the financial lease receivables and in the operating lease receivables recognized by the lessor. So from the lessor point of view, it is talking about. So lessor means A limited. A limited is giving the machine. So A is the lessor here. Are subject to the derecognition. So here, uh, whatever the derecognition rules are there, and for the impairment, the Ind AS 109 is applicable in this one. Okay. The lease liability recognized by the lessee are subject to the derecognition requirement. So here, whatever the B limited has recognized the liability, uh, this we will cover in the lease accounting standard in detail. So there also we will come back to on this particular scoping. Then you will be having a better picture. So the lease liability also. So lease liability is also scoping out uh, from this financial um instrument, because if you see, so this is a financial liability, so here your financial instrument, so it's you are scoping out, so that means because it is getting covered under the particular accounting standard. So first thing again I am telling you first, uh, what I am means this is my understanding. So like first it should be financial instrument, then only the scoping out step will come, correct? So that is the main thing here. So I am just trying to tell you like here how
first it is a financial instrument. Okay. So like this one, what I have said you, so from the lesser point of view, it will be a financial asset. So because it's a financial instrument here, because it is he's receiving the finance cash, so that means it is a financial asset. But now here you are doing the second step, that is a scoping out. So means you are saying that okay, because for this one, for this financial asset, you are having a particular accounting standard. So uh, for the accounting of this financial asset, you need to refer the Ind AS 116, correct? But but for the de-recognition, whenever you be de-recognizing this asset from your balance sheet, so then you need to follow the rules of the Ind AS 109. And similarly, for the impairment of this financial asset, you need to follow the accounting standard Ind AS 109. Correct? Similarly, for the lease liability also, for the de-recognition, you need to follow um, um, uh, 109. Okay. Otherwise, this lease liability, it is coming under the Ind AS 116. So here there is no point of impairment, so that's why it hasn't talked about the impairment here. Okay. Derivatives that are embedded in the lease are subject to the embedded derivatives requirement of the Ind AS 109. Okay, so embedded derivative means like suppose here it has given some option also, like in this contract, uh, that like um every year this amount of this cash, it will be increased subject to the, say, it depends on the uh, Sensex or your Nifty's performance. Okay, so now so here the amount will be varying. So that fluctuation of the amount, so that is your um, derivative, because there the underlying is your Sensex or your Nifty. Correct. On that basis, you are determining the cash amount which you need to pay. So that is a derivative, and it is embedded in this one because here your host contracts. So this again you will be covering under the embedded derivative and the whole derivatives chapter. So there you are having a host contract and plus the embedded derivative, that is a concept. So host contract, it is like a pure lease. Okay, pure lease. So here in the lease, what you are giving the machine. Okay, in this example, and the embedded derivatives here, that your the payment, it will also subject to the performance of Sensex or Nifty. Okay, in future. So this is your embedded derivatives. Now see, so here whether this, it is to be split from host contract or not, so that it is taken care by that particular chapter. So this is what it is talking about. The derivative that are embedded in the lease are subject to the embedded derivatives requirement of the Ind AS 109. So whether it is to be separated or not, so for this one, it is governed by the Ind AS 109 rule. Correct. Similarly, the employer's rights and obligation under the employee benefit plans to which the uh, Ind AS 19 employee benefit applies. Okay, so this is talking about the employer, this thing. So it is having a first, it is a like what is the employer's rights and obligations. So like employer, it has to pay the provident fund, correct? So or if it is having any what you say, the employee benefit scheme is there, so in that the employer has to deposit the money. Okay, so it is the outflow of the cash. So only the one leg is there, so outflow of the cash is there. Outflow of the cash is there. So this is a financial instrument. But here, what you are doing the scoping out, because for this thing the particular, there is a dedicated accounting standard, that is the Ind AS 19, so it will be governed by that thing. So first this is a financial instrument, now you are scoping out. Okay, so this is talking about the insurance. So this is, I'm not going through in detail because here this Ind AS 117, that is a new accounting standard of the insurance contract. Earlier it was the Ind AS 104 it was. So so in this the insurance contract, for the insurance contract, you're having dedicated accounting standards. So that's why it is not covered in this accounting standards. But quickly I will be reading. So rights and obligation arising under an insurance contract as defined in the Ind AS 117, other than an issuer's rights and obligations arising under the insurance contract that meets the definition of the financial contract. Okay, so financial guarantee contract is there. So financial guarantee contracts. So okay, just read it again. Rights and obligation arising under an insurance contract.
okay, under this accounting standard, other than the issuer's rights and obligation arising uh, under insurance contract that meets the financial guarantee contract. So it is separating out. So like it is saying that wherever this insurance contract is there, so for that you will be having the dedicated accounting standard. But for the financial guarantee contract, it is having a different rule. But yeah, it is also coming under the insurance. But here also you can follow the Ind AS 109. This is what it is trying to say. And second, the contract that is within the scope of the Ind AS 117 because it contains a discretionary participation feature. Discretionary participation feature means whatever the excess money is there with the insurance entity, so that it needs to distribute it among the unit holders. So this is called as a discretionary. So it depends on the, it is at the discretion of the insurance entity to pay it to the unit holders or not. Okay, so that is this thing. So on the discretionary participation feature and the insurance contract, this particular accounting standard is there. But for the financial guarantee contract, so that is separate thing. In that it can apply the Ind AS 109 or your Ind AS 117. So it depends. It depends on the entity. Like on each contract, it can select whether it wants to go for the Ind AS 109 or Ind AS 11, Ind AS 109 or Ind AS 1007. Okay. So, however, this standard applies to derivatives that are embedded in the contract within the scope of the, if the derivatives are not itself within the scope of the index 109. So, normally by default for the derivative you are going for the index 109. But yeah, but sometimes the some derivatives, this also you will be seeing in derivative and embedded derivative, where if you are having a non-financial risk. Okay, so this I'm just using that word. So it is there the non-financial risk plus in that it is specific to that party. Okay, specific to that party. So on that, so this is the risk specific to that party. So this is the particular risk on which the insurance contract is, means Ind AS 117 is applicable. Otherwise, for the financial risk and non-financial risk, which is not specific to the party, not specific to the party, not specific to the party. In both the things where the underlier is this one, so here Ind AS 109 is applicable. Okay, and here it is Ind AS 117 is applicable. 117 is applicable. So this is what it is saying. So derivatives. So if the derivative is having underlying of this one, so then the Ind AS 109 is applicable. Otherwise, if the derivative where the underlying risk is this one, there the insurance contract is applicable. Okay, and there also like you are having an option that you can go for the because here this financial guarantee contract is coming in this one. Financial guarantee contract it is coming. I'm not going in detail in this one because hardly in the exam it is asked. But yeah, so in this also different types are there in the financial guarantee contract. Uh, so in the financial guarantee contract you are having underlier is this one, non-financial risk plus the specific to that party. So, so there you are having an option to go for the Ind AS 109 or for the 117. Correct. This standard applies to the investment components that are separated from the contract within the scope of Ind AS 117. If Ind AS 117 requires such separation, unless the separated investment component is an investment contract with the discretionary participation. So it is talking about the investment component. So like investment component अगर रहते हैं उस like insurance entity, suppose if it is giving one policy, it is issuing one policy where uh, your return it is based on the, it is investing that money, it is investing that money in the share market, correct? So on the basis of that return, the unit holder will be getting the amount. So now, so this is the investment component, correct? Because that amount, whatever the insurance entity is receiving from the policy, it is investing it in the
in the share market, correct? So this is the investment component it is talking about. So investment component, if it is separated from the insurance contract, then on that you will be applying the Ind AS 109, because normally in the investment component you are having underlying of financial risk. That's why. So wherever the underlying is the financial risk is like your um, money, which you can say money, not the money, like where you're having FX, equity, commodity, your credit risk, your market risk. So all this FX, equity, and commodity, it comes under the market risk. Okay, and then the operational risk is also there. So the market risk and the credit risk. So this mainly it comes under the financial risk. So and in this one, the not specific to the party. So here the example is like your earthquake. Okay, and here the example non-financial risk plus the specific to that party like your life insurance, life insurance or your yeah life insurance. So here the person who has taken the policy, if he's if he gets died, so then the insurance entity has to give the money. So this is specific to the party, correct? It is not impacting the other person, and it's a non-financial risk because it is your health and your life. So it's a non-financial risk. Moreover, if an insurer i- Moreover, if an issuer of the financial guarantee contract has previously asserted explicitly, so this is what I'm saying. I was referring to the financial guarantee contract. Moreover, if an issuer of the financial guarantee contract has previously asserted explicitly that it regards such contracts as an insurance contract and has used the accounting that is applicable to the insurance contract, the issuer may elect to apply either this standard, this means Ind AS 109 or the Ind AS 117 to such financial guarantee contract. Okay, so first the financial guarantee contract is the financial instrument, correct? Because this is what what I've told you, that the insurance entity, it is getting fees for giving for giving the financial guarantee contract, and in the case that event happens, then the entity has to give the money back, correct? Or whatever the amount for that the insurance is taken, so that money is to be given. So here also cash. So that means your it's a financial instrument. So first this financial instrument, then you're scoping out, and it depends. Like the for the financial guarantee contract, you're having a special provision that if it is uh, you are accounting it under the index, means you are treating it as an insurance contract, so then you are having a flexibility to either treat it as for the new financial guarantee contract, you can go for the index 109 or 117. This standard applies to an entity's rights and obligation that are the financial instrument arising under the credit card. Okay, and similar context. So this is talking about the credit card. Uh, so that's it. And this standard applies to an entity's rights and obligation that are the financial instrument arising under the insurance contract that an uh, that an entity issues the limit to the compensation for the insured event and the amount. So this is also like it is going little bit in detail about the Ind AS 117 where you are putting the limit on the claim. So this is talking about that thing. Okay. So that's it for the insurance contract. Now it is coming for the business combination. So in the business combination, any forward contract between an acquirer and a selling shareholder to buy or sell an acquiree that will result in a business combination within the scope of Ind AS 103 business combination at a future date. So the terms of the forward contract should not exceed a reasonable period. So this is a condition it has put for the forward contract. So the forward contract, first thing, forward contract is your financial instrument. Why? So like A Limited is planning to acquire B Limited. Okay. So in the business combination, where A Limited after the 3 months, I can just in a time period like after the 3 months. Okay, after the 3 months, so A Limited has entered into a B Limited in a forward contract.
जिसमें ये बोला है कि ए लिमिटेड से इतना कैश देगा, से एक्स नंबर ऑफ कैश, एक्स अमाउंट ऑफ कैश, एंड इट विल गेट 60% ऑफ द स्टेक ऑफ बी लिमिटेड। सो यहाँ पे बी लिमिटेड के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ये कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, and that is in the future. So this is what it is trying to say. So first thing, this is equity shares in this one, and here it is the cash. So that means it's a financial instrument, and both the legs are pending. So that is a forward contract. First, this is a forward contract, is a financial instrument. Now the scoping out it is talking about, because for this particular accounting, for this particular contract, Ind AS 103 is there. That is a business combination. So that is a scoping out. Correct. The loan commitment other than the loan commitment described below. Normally the loan commitments में क्या होता है आपका loan commitment मतलब I am just promising to pay uh, like your working capital जैसे बोल लेते हैं फिर loan commitment की A limited means ICC bank is promising uh, ICC bank is promising to pay um to Reliance 1000 crore in 3 years time period. So now the Reliance, it can take any amount up to 1000 crore till 3 years. So this is the loan commitment. So this is what it is called as a loan commitment. So for the loan commitment, ICC Bank, it charges a fee like in the financial guarantee contract, and then in the future it will be paying the cash. So ICC Bank, it is getting the fees for this thing, for the loan commitment facility from the Reliance, and then if the Reliance is opting for it, then the ICC Bank has to pay up to 1000 crore of loan, okay, in future till 3 years. So this is a financial instrument first, correct? Here is a cash and here is also cash. So the financial instrument is there, this one. Now it is talking about the scoping out. So loan commitment other than those loan commitment described below. So it is saying that generally the loan commitment, for the loan commitment you are having different accounting standard, that is the Ind AS 37 and Ind AS 115. Uh, Generally, but other than these three loan commitments, you are having a different accounting standard. And for these three loan commitments, you need to follow the Ind AS 109. That is a financial instrument accounting standard. So loan commitment that the entity designates. This designate word is very important. Uh, in the practical world, like this is a very important thing. So I think if it is discussed in the second chapter, then I will touch upon. Otherwise, just I will give you at a high level overview about it. Designate. So this is very important word here. So that the entity designate as a financial liability loan commitment at a fair value through P&L. Okay. So if it is designating this opting this if it is opting normally for the financial liability, you are having amortized cost and the fair value through P&L. This is what I've talked about in the beginning. So now if it is opting for this one, the entity is opting for the loan commitment for this FETPL accounting, that is designating it. So then you need to follow uh, the Ind AS 109. That is a IF financial instrument accounting standard. Okay, an entity that is a past practice of selling the asset resulting from its loan commitment shortly after the origination shall apply this standard to all its loan commitment in the same class. So it is saying like जो भी कोई लोन कमिटमेंट है जो आपने सपोज इसी केस में कि 1000 करोड़ का आईसीसी ने लोन दे दिए रिलायंस को, और उसके बाद वो क्या करता है कि उसको आगे जाके सेल कर देता है या फिर सिंडिकेट करते हैं कि अदर बैंक्स के साथ, बिकॉज दिस इज वेरी बिग अमाउंट, करेक्ट, आगे जाके सेल कर देता है किसी और को थ्रू द एसपीवी, और या फिर किसी और बैंक के थ्रू ये 1000 करोड़ की फंडिंग करवाता है वो। तो
तो यहाँ पे जैसे बोले फंडिंग के बारे में तो छोड़ दीजिए कि ये आगे ये 1000 करोड़ को सेल कर देते थ्रू द एसपीवी, करेक्ट। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल, सो दिस ऑल्सो ए कंसेप्ट इन द एएफएम कि आप इसको अपने बैलेंस शीट से हटा रहे हैं और इसके बदले आपको कैश मिल रहा है जो आप सेल कर रहे हो, करेक्ट, थ्रू द एसपीवी। So that is a past practice of selling the asset resulting from its loan commitment. तो अगर वो है तब भी आपको क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर लोन के लिए आपको इंड एस 109 दैट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो करना पड़ेगा। लोन कमिटमेंट डेट कैन बी सेटल्ड नेट इन कैश और बाय डिलीवरिंग और इशूइंग अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये लोन कमिटमेंट जो आपका नेट नेट में सेटल हो रहा है, नॉट इन द ग्रॉस। सो हियर लाइक इफ यू सी द ग्रॉस में चल रहा है फीस और यहाँ पे आप ये दे रहे हो नहीं, लेकिन आप इसको कहते हैं नेट में सेटल कर रहे हो, ठीक है। नेट में अगर आप सेटल कर रहे हो तो फिर ये आपका दिस आर द डेरिवेटिव्स एंड फॉर द डेरिवेटिव्स यू विल बी अप्लाइंग द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सिमिलरली अगर आपका कोई कमिटमेंट है जो आप क्या कहते हैं बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट आप लोन पे दोगे, तो उसके लिए भी फिर आपको इंडियस 109 ही अप्लाई हो रहा है। अदरवाइज इन तीनों को छोड़ के बाकी जो लोन कमिटमेंट्स है उसके लिए वो डेडिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, दैट इज द इंडियस 37 एंड 37 and your 116, oh sorry 115, you will be applying. So however an issuer of the loan commitment shall apply the impairment requirement of this standard to the loan commitment that are not otherwise within the scope and also the loan commitment that are subject to the derecognition. Okay, so here ये क्या बोल रहा है कि जो लोन कमिटमेंट स्कोप में नहीं है इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, उनके लिए आप क्या कहते हैं जो इम्पेयरमेंट रूल है वो आपको यहीं इस वाले पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज ऑफ इंडियस 109। सिमिलरली द डी रिकग्निशन रिक्वायरमेंट भी आपको क्या कहते हैं इंडियस 109 की ही फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज फॉर द ऑल लोन कमिटमेंट्स। Okay, now this financial instrument, the contracts and the obligations under the share-based transaction to which the Ind AS 102 share-based payment applies, except for the contract to buy the non-financial item as described below. तो इसके लिए डेडिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये थोड़ा मेरे को भी स्केप्टिकल लगा कि पहले ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कैसे, क्योंकि जो शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो एंटिटी है उसको कुछ गुड्स और सर्विसेज मिल रही है, किससे से मान लो एम्प्लॉइज से, ठीक है। एम्प्लॉइज से मिल रही है या फिर थर्ड पार्टी से मिल रही है, मीन्स आउटसाइडर। और उसके बदले फिर ये एंटिटी क्या कर रही है, अपने ओन शेयर्स दे रही है, ओन शेयर्स दे रही है, दैट इज सेटल्ड इन द ओन शेयर्स। और कैश सेटल हो रहा है, कैश सेटल हो रहा है मतलब कैश के फॉर्म में सेटल हो रहा है, लेकिन जो जो कैश सेटलमेंट का जो अमाउंट है वो डिटरमिन होगा जो ओन शेयर्स है उसके बेसिस पे उसका कैश का अमाउंट डिटरमिन हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका नॉन फाइनेंशियल आइटम हो गया और ये आपका क्या कहते हैं ये फाइनेंशियल आइटम हो गया, बिकॉज ये ओन शेयर्स और ये इक्विटी शेयर्स में मतलब इक्विटी शेयर्स और कैश में। तो अगर ये दोनों पेंडिंग है तो फिर ये तो आपका क्या कहते हैं फाइनेंशियल आइटम तो हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे आपका स्कोपिंग आउट तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस जैसे रहते हैं कि जैसे कि एंटिटी ये जो अपने अगर ओन शेयर्स क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ को दे रही है तो उस ओन शेयर के लिए आप एंटिटी ट्रेजरी शेयर्स क्या कहते हैं बाई बैक करती है अपना मार्केट से, ठीक है। ट्रेजरी शेयर्स यहाँ पे बाई बैक कर रही है और यहाँ पे वो कैश दे रही है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेजरी शेयर्स वो क्या कहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को देगी, ऐसा एक ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो ये तो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, करेक्ट। So here you are using the treasury shares to give it to the employees who are satisfying the conditions of the SBP, that is uh, vested अगर हो रहा है तो, ठीक है, और एम्प्लॉयज ने एक्सरसाइज किया है तो वो ओन शेयर्स ये ट्रेजरी शेयर्स वहाँ पे उसको पास ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कहते हैं आप इंडेस 109 एप्लीकेबल होता है। बट हेयर आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल कि ये कैसे हो सकता है कि ये आपका या इस पर्टिकुलर उसमें क्या कहते हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे है, क्योंकि आप गुड्स और सर्विसेज से मान लीजिए, हाँ ये हो सकता है कि ये अगर लेग परफॉर्म हो चुका है
ठीक है, उसके बाद केवल यही लाइक आउटस्टैंडिंग है कि मतलब ये अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ है, तब आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा। तो वो अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ तो उसके लिए फिर इन लोगों ने स्कोपिंग आउट करके बोला है, करेक्ट, उसके लिए इन लोगों ने स्कोपिंग आउट करके बोला है कि ठीक है, उसके लिए आप क्या कहते हैं, डेडिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 102, आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जो वेस्टिंग हो रही होती है, आप ये जब हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट जब ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तब उसमें आपको समझ में आएगा कि से मान लीजिए, जस्ट क्विकली मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल ये 4 ईयर्स का है। 4 ईयर्स का 3 ईयर्स तक ये वेस्ट हो रहा है कि अगर आपने एम्प्लॉय ने यहाँ से लेके 3rd ईयर तक काम किया है, उसके बाद ये जो आपको जो ये ऑप्शन दिया गया है एम्प्लॉय को कि विद इन 1 ईयर आप क्या बोलते हैं, अपना स्टॉप ले सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई सर्विस में होना जरूरी नहीं है, करेक्ट। सो टिल हेयर ये लेग परफॉर्म हो रहा है, मतलब अभी इन द प्रोग्रेस है। और यहाँ पे जब ये 3rd ईयर एंड हो जाता है, जब वेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद ये लेग ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है कि मतलब एम्प्लॉय सर्विस में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सर्विस में भी नहीं रहता तब भी आप क्या कहते हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव कंप्लीटेड द 3 पास्ट ईयर्स। ठीक है, तो उस केस में ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना, तो यहाँ पे स्कोपिंग आउट हो रहा है उसका। बस इस केस में लेकिन आपका स्कोपिंग आउट नहीं होता है, तो इसमें कोई सेंस नहीं है। ठीक है। सो आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, कि आपका अगर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, पूरी चीज़ें। सॉरी, थोड़ा स्पिल ओवर हो रहा है लेक्चर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट इट दिस इन दिस वन लेक्चर ओनली। ओके, जस्ट काइंडली bear with me more, I think 10 minutes, so we are about to complete it. Yeah. So rights to the payment, to the reimbursement, right to the payment, to the reimbursement, the entity for the expenditure it is required to make the settlement of the liability that it recognizes a provision in accordance with the Ind AS 37 contingent liability, and for which in the earlier period it recognized a provision. ओके, इसमें क्या बोल रहे हैं कि राइट टू द पेमेंट, right to the reimburse the entity for the expenditure it is required to make a settle a liability. ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि अ, जैसे कोई एंटिटी है, सी सी लिमिटेड है। सो सी लिमिटेड को कुछ अ, कोई इवेंट अकर हो गया, और वो इवेंट अकर होने की वजह से उसको उसका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ रहा है। ठीक है, से प्रोविजन ऑफ से 10 करोड़, लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए सी लिमिटेड ने इंश्योरेंस भी ले रखा है। सो इंश्योरेंस यहाँ पे उसको गारंटी दे रहा है। तो इंश्योरेंस ले रखा है, से मान लीजिए आईसीआई से लुम्बार्ड से उसने इंश्योरेंस ले रखा है, ऐसे से जनरल इंश्योरेंस से उसने आ, ले रखा है। तो इसमें 10 करोड़ से, अब ये इवेंट अगर हुआ है तो आईसीआई जनरल इंश्योरेंस को 8 करोड़ यहाँ पे सी लिमिटेड को पे करना है, करेक्ट। तो ये अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मली सी लिमिटेड ने पहले उसको फीस पे किया होगा, इट इज़ लाइक ए गारंटी, एंड नाउ वो इवेंट अकर हो गया है, तो अब आईसीसी बैंक, आईसीसी जनरल इंश्योरेंस को ये 8 करोड़ उसके लिए पे करना पड़ेगा। दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज इन बोथ द लेग्स यू आर हैविंग ए कैश, करेक्ट। सो इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट थिंग। सो नाउ लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में ये जो आपको 8 करोड़, उसके लिए आपने पहले से इसी लिमिटेड ने इवेंट अकर हो गया और उसके लिए प्रोविजन क्रिएट किया है। तो ये 8 करोड़ के लिए आप क्या कहते हैं, इंडेस वन, इंडेस 37 अप्लाई करिए। तो ये स्कोपिंग आउट कर रहा है उसको, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है कि सी लिमिटेड को वो इवेंट होना चाहिए और उसके लिए वो प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए, तभी क्या कहते हैं ये जो लाइबिलिटी, जो आईसीसी, ये जो क्या कहते हैं सी, कोई जो मनी जो रिकवर करेगा आईसीसी जनरल इंश्योरेंस से, उसके लिए इंडेस 37 अप्लाई होगा, नॉट इंडेस 109, करेक्ट। सो फर्स्ट दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फर्स्ट दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एंड नाउ यू आर स्कोपिंग आउट दिस थिंग।
ओके, यहाँ पे क्या क्या बोल रहे, सॉरी, rights and obligations within the scope of Ind AS 115, revenue from the contract with the customer that are the financial instrument, except for those Ind AS 115 specifies are accounted for in accordance with the standard. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सेम एग्जांपल है, बिकॉज दिस B Limited has given the goods or services, correct? Now A Limited has to pay the cash. So for B Limited, it's a revenue. Okay. So now, if both the legs are not performed till now, means दोनों लेग अगर पेंडिंग है, तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, करेक्ट? तो यहाँ पे आपका इंड एस 115 एप्लीकेबल है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर ये लेग परफॉर्म हो जाता है, करेक्ट, ये लेग अगर परफॉर्म हो जाता है और उसके बाद केवल यही लेग बचता है केवल जिसमें कैश पे करना है, तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट। और उसको फिर ये लोग स्कूपिंग आउट करने के लिए बोल रहे हैं कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विद इन द स्कोप ऑफ इंडेस 115 विद द कस्टमर्स डेट आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कब बनेगा? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो तभी बनेगा जब, क्या कहते हैं, ये आपका क्या बोलते हैं, अम, ये लाइक केवल आपका आउटस्टैंडिंग हो, ठीक है। दूसरा, और अगर गुड्स और सर्विसेज के बदले सपोज बी लिमिटेड अगर आपका बैंक है, ठीक है, बैंक आपको एक गारंटी प्रोवाइड कर रहा है और उसके लिए फीस ले रहा है, ठीक है। सपोज मान लो कि बैंक, जो लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, करेक्ट। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या रहता है कि बैंक जब इशू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी इशू करता है, एलसी इज जस्ट लाइक योर गारंटी, करेक्ट, से ए लिमिटेड को। और इसके बदले ए लिमिटेड यहाँ पे उसको फी पे कर रहा है, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या है कि आप यहाँ पे उसको कैश पे करोगे, करेक्ट, कैश पे करोगे। और तो लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, आपका जो सेटलमेंट है वो कैश के फॉर्म में होता है, करेक्ट। तो जैसे ही अब यहाँ पे देखा जाए, दोनों लेग आपके दोनों लेग ही आपके कहते हैं कैश में है, तो इट्स ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट। तो ये जो फीस जो है, फीस जो उसको मिली है, तो दिस इज रेवेन्यू फॉर द बैंक, करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो अनदर केस। सो यहाँ पे दोनों लेग अगर आप देख रहे हैं तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे अगर दोनों आउटस्टैंडिंग है तब भी ये क्या कहते हैं, इसमें ये जो फीस है इसको कैसे रिकग्नाइज करना है, वो उसके लिए ए एस 115 है। सो फर्स्ट दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इसमें अगर एक लेग परफॉर्म हो गया, दूसरा लेग अभी परफॉर्म नहीं हुआ है कैश वाला, तो इसमें भी आपका क्या बोलते हैं, ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आप इसको स्कोपिंग आउट कर रहे हैं, तो फिर अब आपको ये इसका रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करेंगे, बी लिमिटेड, तो वो उसके लिए आपका 115 एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आगे साथ में क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट फॉर दोज, so rights and obligation within the scope of that are the financial instruments, so this is what I've said. Now except for those that Ind AS 115 specifies are accounted in accordance with this standard. तो अब इंडियस 115 में जब हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे उसने स्पेसिफिकली बोल रखा है कि आपको इंडियस 109 ही अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आपको इंडियस 109 ही अप्लाई करना है, ओके। सो ये जैसे अभी टेबल आप गो थ्रू कर लेना, जिसमें आपको बहुत इजी पड़ेगा कि क्या है। तो जैसे ये एट कॉस्ट है, तो एट कॉस्ट आपका कहाँ कौन बताता है, एसएफएस स्टेटमेंट बताती है। तो जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है वो आप एट कॉस्ट ले सकते हो, एफ ले सकते हो, या फिर मतलब फेयर वैल्यू ले सकते हो, और एफ पे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इन सब्सिडरीज जो आप एट कॉस्ट अगर ले रहे हो, तो आपको ये एट कॉस्ट क्या कहते हैं, इंडेस 109 और 32 नहीं बताता है, वो आपका कहते हैं वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहे हैं 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आप वो फॉलो करते हो, ठीक है। आप ये गो थ्रू कर सकते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। बिकॉज आई एम जस्ट रनिंग आउट विद द टाइम, सो क्विकली मैं ये बस ये लास्ट टॉपिक आपका कवर कर लेता हूँ।
ये आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूँ बिकॉज इट्स वेरी सिंपल थिंग. सो कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल द नॉन फाइनेंशियल आइटम फॉर द ओन यूज एग्जाम्पशन. तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये सिंपल वही बोल रहा है कि आपने कुछ ए लिमिटेड ने कैश पे किया है, ठीक है, और उसके बदले क्या कहते हैं उसको यहाँ पे कुछ से मान लीजिए मशीन मिल रही है बी लिमिटेड से, ठीक है. तो अगर वैसे देख रहे हैं अगर ये दोनों लोग अगर आउटस्टैंडिंग है तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है बिकॉज दिस इज योर नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. लेकिन अगर ये ए लिमिटेड उस मशीन को आगे जाके सेल कर देता है immediately within the short span of time. So here A Limited is acting as a trader. ठीक है, वो उसके लिए अपने खुद के यूज़ के लिए नहीं कर रहा है, खुद के बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहा है उस मशीन को. तो इस केस में क्या होगा अगर ये आगे सेल कर देते तो डेट मीन्स दिस इज योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. So this is what they are trying to say. So contracts to buy or sell the non-financial items are outside the scope of the financial instrument first. ठीक है, अगर वो ओन यूज़ के लिए होता है तो वो आपका are outside the scope of the financial instrument हो गया because this leg is your non-financial item. Contract to buy or sell the non-financial item except the following it is mentioned. Now exception देखते क्या चीज़ बोल रहे हैं वो. तो इन exception में इसको financial instrument बोला जाएगा. So contract to buy or sell the non-financial item that can be settled net in cash or in the another financial instrument or by exchanging the financial instrument if the contract were the financial instrument with the exception that the contract that were entered into and continue to be held for the purpose of the receipt or delivery of the non-financial item in accordance with the entity expected purchase. So ये सेम पॉइंट ही बोल रहे हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं नेट सेटल हो रहा है, ठीक है, ये ग्रॉस सेटलमेंट है, इसके अगर नेट सेटल हो रहा है कि ठीक है कि सपोज मान लीजिए कि मशीनरी ए लिमिटेड ने एंटर किया कि आफ्टर 3 मंथ्स वो परचेज करेगा एट दिस प्राइस एट एक्स प्राइस, ठीक है. और उसके बाद क्या बोलते हैं दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और जो 3 मंथ्स की मैच्योरिटी पे आएगा जो भी उसका प्राइस आएगा द डिफरेंस बिटवीन द वाई एंड एक्स, वाई इज द मैच्योरिटी प्राइस, तो दोनों का जो डिफरेंस जो रहेगा वो नेट सेटल हो रहा होगा इन दोनों के बीच में. सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. तो वो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ गया. A contract to buy or sell the non-financial item that can be settled net in cash or another financial instrument by exchanging that are the irrevocably designated. अगर आपने डेजिग्नेट कर रखा है FVTPL पे तब वो फिर आपका क्या कहते हैं क्या बोलते हैं वो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है. इवन इफ इट वाज एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ द रिसीट और द डिलीवरी, इवन वो आप क्या कहते हैं अगर आप उसको अपने ओन यूज़ के लिए अपने बिजनेस यूज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको उसको क्या कहते हैं उस पर इंड एस 109 ही एप्लीकेबल होगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही एप्लीकेबल होगा बिकॉज यू हैव डेजिग्नेटेड एट द FVTPL in the beginning itself. ठीक है, this designation is available only at the inception of the contract only if it eliminates or significantly reduces the inconsistency. So normally this designation ये जो है you are going for the accounting mismatch. So this is also very important term. आई थिंक ये भी यूनिट 2 में होना चाहिए. एक बार यूनिट 2 में जब आएंगे तो हम लोग ये गो थ्रू करेंगे. सो बट या सो नॉर्मली जिस डेजिग्नेशन का कंसेप्ट होता है वो एक अकाउंटिंग मिसमैच के लिए यूज़ होता है कि सपोज मान लीजिए आपकी कोई लायबिलिटी है. सपोज ये मान लीजिए ये जो आपने जो मशीन परचेज करी है, ठीक है, ये मशीन आपने जो परचेज करी है वो लोन के बेसिस पे करी है, ठीक है, आपने लोन लिया और लोन आपका क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट. बिकॉज हेयर आपका जो सेटल होगा फ्यूचर में वो कैश आपका आउटफ्लो होगा जो आपको रीपे करना पड़े, तो डेट्स इट्स ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया, ठीक है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है. अगर आपने इसको एमोटाइज कॉस्ट पे सॉरी इसको आपने FVTPL पे दिखा रखा है और अब अगर आप ये मशीनरी को आप एमोटाइज कॉस्ट और वही लोन को आप मशीन परचेज करने के लिए यूज़ कर रहे हो यहाँ पे और इसको आप एमोटाइज कॉस्ट पे दिखा रहे हो, सो दिस इज़ योर अकाउंटिंग मिसमैच. तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे इस मशीन को फिर आप क्या कहते हैं FVTPL पे दिखाओगे. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सो डेट यहाँ पे जो भी FVTPL में जो भी आपका गेन और लॉस हो रहा होगा वो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ऑफसेट होता रहेगा. तो ये अकाउंटिंग मिसमैच को हटाने के लिए कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, तो डेजिग्नेशन वहाँ पे यूज़ हो रहा है. सो एमोटाइज कॉस्ट होना चाहिए कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है, ठीक है, लेकिन उसको आप डेजिग्नेट कर रहे हो उसको हटा के आप डेजिग्नेट कर रहे हो उसको आप सुपरसीड करके आप बोल रहे हो ओवर रूल करके आप उसको मैं FVTPL पे लेके जा रहा हूँ बिकॉज ड्यू टू द अकाउंटिंग मिसमैच. A return option to buy or sell the non-financial item that can be settled net in cash or another financial instrument or by exchanging the financial instrument where such a contract was not entered into for the purpose of receipt or the delivery of the
फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल आइटम इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेड परचेज। तो यहाँ पे डिलीवरी मतलब मैं उसको अपने खुद के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और ये दूसरा ये नेट सेटल हो रहा है, और दिस इज अ डेरिवेटिव रिटर्न ऑप्शन है। ठीक है। तो ये भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कवर होगा। So there are the various ways in which the contract to buy or sell the non-financial item can be settled net in cash or another financial instrument, or by exchanging the financial instruments. So these include when the terms of the contract permits either party to settle net in cash or another financial instrument or by the exchange। तो यहाँ पे टर्म पे क्या है कि आपको क्लियरली आपने मेंशन करा कि वो नेट में सेटल होगा, तो ये किए हो गया। दूसरा, व्हेन द एबिलिटी टू सेटल नेट इन कैश और अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय द exchange is not explicit in the contract, but the entity has but the entity has a past practice of settling the similar contract net in cash or the another financial instrument, or by exchanging the financial instrument by entering into the offsetting contract or selling the contract before its exercise or the lapse। ठीक है, तो ये भी नेट सेटलमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड व्हेन द सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट द एंटिटी हैज अ प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एंड सेलिंग इट। सो जो मैंने आपको बताया यहाँ पे ऊपर कि आपने परचेज किया और इमीडिएटली आपने उसको आगे सेल कर दिया विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। सो हेयर यू आर एक्टिंग एज अ ट्रेडर, आप उसको अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये भी एक नेट सेटलमेंट का फॉर्म हो गया। एंड व्हेन द नॉन फाइनेंशियल आइटम दैट इज सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रेडिली कन्वर्टेबल इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इनटू द कैश, कि ये जो नॉन फाइनेंशियल आइटम है वो तो इजीली क्या कहते हैं मार्केट में कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, ABC Limited enters into a contract to buy 100 tons of coca bean। तो ABC जो लिमिटेड है यहाँ पे, सो दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। तो ये बाई कर रहा है कोका बीन्स। ओके, कोका बीन्स एट 1000 पर टन। ठीक है, फॉर डिलीवरी इन द 12 मंथ्स। तो ये इसकी डिलीवरी 12 महीने बाद होगी। So on the settlement date, the market price for the coca bean is 1500 per ton। ओके, तो इसका प्राइस बढ़ गया है। सो बट ABC कैन परचेज इट एट द 1000, और 1500 उसका हो गया, तो 500 का उसको गेन हो रहा है अगर वो इमीडिएटली क्या कहते हैं उसको अगर नेट सेटल करेगा तो। So if the contract cannot be settled net in cash and this contract is entered for the delivery of the coca beans in line with the ABC's expected purchase usage requirement, then the own usage exemption will apply। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप ये सिंपल यहाँ पे आप उसको ये कोका बीन्स को आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप कैश दे रहे हो, तो ग्रॉस सेटल हो रहा है, तो आप ये कोका बीन्स को आगे कहीं सेल नहीं कर रहे हो, आप उसको अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, तो फिर ये आपका नॉन नॉन फाइनेंशियल आइटम हो गएगा, विच इज़ करेक्ट ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। So in such case, the contract is considered to be an executory contract outside the scope of the Ind AS 109, hence shall not be accounted as a derivative। So this is correct। So ये executory contract हो गया कि ये execute होगा आगे in future। तो ये आपका, और ये डेरिवेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि ये डेरिवेटिव क्योंकि आप इसमें कोई नेट सेटल नहीं कर रहे हो, या फिर इसको आगे जाके आप क्या कहते हैं इसको बेच नहीं रहे हो, जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट एज ए ट्रेडर। सो आई थिंक दैट्स इट। सो हेयर वी आर कंप्लीटिंग द चैप्टर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।